Yes, roll number 69. Yes, sir. Yes, ma'am. Sir already joined झालेत. एक मिनिट. ओके सर. करू सुरू? Yes, ma'am. Yes. Okay. Good morning to all. Myself, Mrs. Smita Gorakshanath Shinde, working as Assistant Professor in Computer Science Department, KK Wagh Art Commerce Science, Computer Science College, Nashik, affiliated to Savitri Bai Phule, Pune University. On behalf of UGC, MMTC, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर organizes 16th faculty induction program. I welcome to all participants, guests and organizers. It's my great pleasure to introduce our eminent personality, chief guest, Dr. Ashok Nimesh. Dr. Ashok Nimesh is an assistant professor working in Central University of Jharkhand, Ranchi, in the Department of International Relations. He is doctorate from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. His major area of interest is in human rights with special reference to peace and conflict studies. Presently, Sir is working on gender dynamics in society from a socio-legal perspective. Sir has educational qualifications: BA in History Honors, PG Diploma in Human Rights, MA in Human Rights, MA in Politics with specialization in International Relations, MPhil in Southeast Asian Studies, and PhD in Southeast Asian Studies. Also, Sir has interest of area of interest in politics and international relations, Southeast Asian studies, human rights and gender studies, peace and conflict studies, national defense strategic studies, international law, and maritime security. Sir has 13 years teaching experience in the Department of International Relations, in Department of Contemporary and Tribal Customary Law, and in Department of Human Rights and Conflict Management. Also, Sir Sir has invited as resource person in various seminars, conferences, and workshops. Also, Sir has invited as lecturer in training institutes. Then, Sir has given Sir has invited as guest lecturer in UGC, MMTC, in various FIP and refresher courses in university like Rajasthan, Maharashtra, Haryana, Jharkhand, Uttar Pradesh, Odisha, Kerala, Punjab. Then, Sir has various research publications like book chapters on the topic Frugal Innovations, a catalyst for ठीक है inclusive मैडम, ठीक है economy. ठीक है ठीक है मैडम, बहुत लंबा जाएगा, तो अलाउ मी टू स्टार्ट. ठीक है, इट्स ओके. तो with the permission of the chair and as a Welcome, sir. ceremonial duty है मेरा कि I'll extend my heartfelt gratitude to Dr. Rafi sir for giving me this opportunity to deliberate with my fellow colleagues here in this MNTTC FIP program today. So I'll be taking two sessions back to back with a small tea break in between. So I'll be talking on some contemporary issues of world. So that will be more connecting and more relevant to you. And then I'll be talking about what's happening in the world and what are the things that we should be worried about and what should be the thing we should be taken care of. तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और आज के दिन प्रतिदिन पे जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेके हमें क्या चीज़ों को लेके समझने की ज़रूरत है, एकेडमिक तौर पर क्या हमें जानना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें क्यों जानना चाहिए. तो सभी लेक्चर्स जो भी होते हैं रिसोर्स पर्सन के, सो द बेसिक प्रिंसिपल दैट ड्राइव्स अस इज दैट व्हाई वी नीड टू
listen a talk on particular topic. So I'll be like deliberating on those areas of international relations. It will be a bilingual kind of thing. So if you are comfortable with Hindi, you are comfortable with English, it's okay. Otherwise, all in Hindi or all in English, you just let me know if you face any difficulty. We'll take question in the end. So it will be a very interesting and connecting kind of a deliberation. तो हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट मुझे एक सेकंड दे दीजिए ताकि मैं अपना स्लाइड खोल सकूं. यस, if it is open, just give me 1 sec. Yes, so I'll be dealing with this thing. तो ये आज का मेरा टॉपिक रहेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि ये हम लोगों को सबको कनेक्ट करता है. तो FIP में विभिन्न डिसिप्लिन से और विभिन्न स्कॉलरशिप से आते हैं. तो जो सोशल साइंस से हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस या लॉ से हैं, वो लोग कुछ कुछ हद तक इंटरवेंशन रखते हैं इन सब्जेक्टों पर. बट क्योंकि FIP एक प्रोग्राम है ओरिएंट करने का टीचर्स को, तो जो कुछ टीचर्स हैं जो बॉटनी, जूलॉजी या साइंसेस से हैं, प्रॉपरली इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हैं, तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को समझना कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे हमको समझना है और इसको लेके हमें क्या सतर्कता रखनी है. तो ओरिएंटेशन का जो FIP का जो प्रोग्राम है MMTTC के अंदर, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, लीडरशिप है, आपका करंट अवेयरनेस है, अप टू डेट इंटेलिजेंस है, तो उन चीज़ों को जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको एनहेंस करने के लिए, आपको डे टू डे चीज़ों को लेकर अवगत कराने के लिए, मल्टीपल डिस्कोर्सेस से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए अलग अलग तरह के डिग्निटरीज आते हैं और वो अपनी अपनी बातें रखते हैं. कुछ नए मसौदे, कुछ नई प्रॉब्लम्स, थियरीज और जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हुए हैं एकेडमिक वर्ल्ड में, उन सब चीज़ों को लेके अपनी बात रखते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या अप टू डेट कुछ चीज़ों से डेली रूटीन मैटर्स से रिलेटेड हो. तो इसी ताने बाने में हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, और अगले एक लगभग 1.5 घंटे में हम इस पर चर्चा करेंगे. और ये टॉपिक मैंने चूज किया है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर. तो इंटरनेशनल और वर्ल्ड, तो दोज हु आर फ्रॉम लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, दे विल many times क्वेश्चन, एंड दोज हु आर बियॉन्ड दोज सब्जेक्ट आल्सो आस्क कि सर इंटरनेशनल भी है, वर्ल्ड भी है, दोनों सब तो एक ही मतलब है, तो आपने दोनों को क्यों यूज किया. तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, तो वर्ल्ड ऑर्डर इज अ टर्म which we use in political science, international law and international relations there, in diplomacy and peace and conflict studies there. तो वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया में जो राष्ट्र हैं, विभिन्न प्रकार के 193 इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसके अलावा कुछ स्वायत्त राज्य भी हैं, राष्ट्र हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं भी और कुछ मेंबर्स नहीं भी हैं. तो पूरे पृथ्वी पे जितने भी राष्ट्र हैं या राष्ट्र राज्य हैं, नेशंस और नेशन स्टेट, सो दे आर स्टेइंग इन सम काइंड ऑफ एन ऑर्डर. और बिना ऑर्डर के पूरी दुनिया चला पाना काफी मुश्किल हो जाता है. तो वो ऑर्डर है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ एक appropriate behavior करेगा. So the state behave in a certain ways which are conducive for peace rather than engaging into conflict. So all the states are mandated in such a fabric that nobody is going to intervene in some other state. In that way, we all are sovereign republics there. तो sovereignty is the fundamental principle. तो 1862 में एक 1892 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाएगा और ये प्रिंसली स्टेट और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा. और उसके बाद जो राज्य की अवधारणा आई पूरी दुनिया में, वो अवधारणा के साथ वी आर गोइंग विद दैट. एंड देयर आर सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच वर डिसाइडेड देयर कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है और उस स्थिति को युद्ध समझा जाएगा, शांति नहीं समझा जाएगा.
तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमने छोटी मोटी घटनाएं देखी, जो युद्ध है, जो फुल फ्लेजेड युद्ध भी देखे, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर थ्राइस, कुछ छोटे मोटे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज की फोर्सेस और इंटेलिजेंस और सम टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेके और मिलिटेंसी को लेके देर आर ग्रुप्स विच इंटरवीन एंड डीस्टेबलाइज द पॉलिटिकल सेटअप इन डिफरेंट स्टेट। तो और हमने ये भी देखा पिछले कई हजारों साल में कि the world has witnessed two world wars, World War One and World War Two. We are well versed with that. So after Second World War, it was decided कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने युद्ध किया तो like we are having 5-7 countries which are having nuclear capability or equally those power to destruct the earth, planet earth. तो अगर अब युद्ध होता है तो अमेरिका रशिया के अलावा भी चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, तो बहुत से राष्ट्रों के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर अब युद्ध हुआ तो पृथ्वी की तबाही सुनिश्चित है। तो इस कारण अब प्रयास ये किए जाते हैं कि अब युद्ध ना हो, राइट। और इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन भी बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस। एंड यूनाइटेड नेशन वाज बेसिकली अ रिकार्नेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फेल हो गया था। और यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं हम उसे, उसका जो प्रमुख जो मैंडेट है वो यही है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पीस और सौहार्द को बना के रखना है, कॉजलिटी एंड पीस, सो दैट स्टेट शुड नॉट इंटरवीन एंड स्टेट शुड नॉट फाइट अमंग ईच अदर। तो ये सब मुद्दों को देखते और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ से लेके आज तक कई बार ऐसी स्थिति हुई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहीं ना कहीं सुखबुकाहट हुई। So there are many episodes that went during the Cold War, during the detent, and India as a firm country stood out of the conflict rivalry, and India has claimed its independent and kind of a sovereign status through non-alignment. And today also we are asserting the kind of role of India, that India is a superpower, but still we are not intervening. We are not keeping sides with one power to bash the other power. We are taking our independent decisions there in the international level, and we are not governed by directions of any superpower as such they are claimed, the Russia or the United States of America. So India took its almost more than 75 years since the end of Second World War, and since the independence it took many years, and now India is at a point where it is having its decisive voice which is heard. That's what India was given chance to head the G20 conference, and there are many summits where India heralded a new era that developing nations can be decisive powers there in the international arena. Since we are one of the protagonists among many nations like Brazil and growing nations like Israel, Australia, Philippines, or South Korea. So we are with many developing nations, and now we have reached to a level where we can say, yes, we have achieved a good level of development. So with that, let's head with what's happening in the world now, what's happening today in the world scenario. So hardly 10 years, हमने सुना कि एक अरब स्प्रिंग हुआ है। ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये कुछ कंट्रीज को हमने कलरफुल किया हुआ है। ये कंट्रीज वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, यमन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर अरब स्प्रिंग हुआ। तो ये अरब स्प्रिंग बेसिकली का काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो जब ये कुछ राष्ट्र थे जहां पर अधिकतर इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि अरब वर्ल्ड है तो इस्लामिक नेशंस है, यहाँ पे इस्लामिक सोशल रिफॉर्मर्स लोगों ने कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दे हैव रीच्ड टू अ पावर दैट दे हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज एन ऑटोक्रेट। तो इन नेशंस में कहीं ना कहीं उथल पुथल हुई और लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो पॉलिटिकल रिजीम्स है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, दे आर होल्डिंग द पावर and they are not democratizing it. Means those who are at the common people, like those who are the common, they are not getting access to political power. So just say, unlike India, where anyone can, if he or she is having capacity, then they can contest election and they can rise to the level of prime minister, right? So we are not having that aristocracy that only the rich and the affluents are becoming president and prime minister. Anyone can become prime minister and president if they are having a suitable career and they decide to fight for the welfare of the nation state.
तो यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी हुई कि लीबिया और कुछ कंट्रीज जैसे इजिप्ट, जहाँ पे लगभग 40 साल से ऑटोक्रेटिक रूल था, तो दे वर स्मॉल सोशल रिफॉर्मर्स, दे वर स्मॉल peoples who rose to leaders, and they have made a kind of groups there, so that we call the tribalism. So different groups that emerge there, a kind of a mafia, and they are controlling the power, and they are holding the state at their hand. But still, the kind of rule which was there in Libya or Algeria, Egypt, Mali, Mauritania, they are unmanageable. And at this age, when people are having access to the mobile phones or the social media, Facebook, Twitter, or any platform, तो लोगों को पता लगा कि पूरी दुनिया में अभी आजादी है, पूरी दुनिया एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहती है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूर्ण होना चाहती हैं। तो उन महत्वाकांक्षाओं को देख के जब इन राष्ट्रों में पता लगा कि काफी हद तक परमिशंस नहीं है, like women were not allowed to go into public places, they were not allowed to go work for occupations, they were not provided with voting rights. So women were first who has leaded the entire movements there. They went on the road with their own protests and the placards with slogans that we want democracy. So, what my point is that India got independence in 1947, and likewise, many of the countries which got independence after 1945, most of them has opted for a democratic setup. These countries also claim that we are a kind of a democracy, but beneath the curtain, what they have established is the autocratic rule of one kind of a leader. तो जैसे गद्दाफी है या कोई भी लीडर है सीरिया में या इजिप्ट में, so they have holded power for many years. So they have not allowed people to vote. They have not allowed people to have suitable elections, and they have not allowed press to come out with a democratic opening. Now it's happening everywhere, though press is now cushioned everywhere in this planet. So somehow the kind of control over the authority has created discomfort among people. तो पीपल दे जो लोग हैं सामान्य नागरिक, वो लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए। वो सिंबल्स जैसे ऑरेंज और वेलवेट और रोज और कलरफुल रेवोल्यूशन, दैट्स व्हाट दे कॉल्ड इट। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम यूक्रेन। सो सबसे पहले यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ते हुए लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया और सूडान और नेबरिंग कंट्रीज में पूरा फैल गया। तो इसके कारण जो ऑटोक्रेट्स थे उन्होंने अपनी पावर छोड़ी और कहीं ना कहीं लोगों ने एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई और अब डेमोक्रेसी की ओर ये कंट्रीज बढ़ गए। सो पिछले 10 साल में काफी चेंजेस हुए। जो पिछले 30-40 साल से ये राष्ट्र कहीं ना कहीं एक घुटन महसूस कर रहे थे, दे हैव कम आउट ऑफ दैट suffocating environment. So what first learning of us is that all the countries on this planet wish to have democracy, because democracy gives us space, freedom and equality to almost every individual, right? So an individual wants freedom, they want equal treatment, they does not want a class treatment like aristocracy or oligarchic are treated equally. Not equally, they are treated at the premium level, and the common people are somehow mistreated at the whims and fancies of the leaders. So democracy was the kind of an ideology which was having the most longing in throughout the world. So it's not only limited with the European or the African, or sorry, American continent, South America or North America. Rather, in African and Asian context also, countries, they drifted towards the kind of democratic setup. So this is good. But I'll recall you, democracy, it originated in primarily in Europe. तो जो ये जो प्रजातंत्र के जो गुण हैं, ये प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, ये यूरोप में इमर्ज होती है। एथेंस, स्पार्टा, उसके बाद ब्रिटेन में, बाइजेंटाइन में, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी. So they have started the democratic values. So many times it's criticized that the democracy which we are talking in India and the other countries, these democracies are basically Western democracy. So we want our own version of democracy. That's good idea. But are we have experience with democracy? If you read the history of many countries in South Asia, Southeast Asia or Asia, these countries have never experienced democracy. That's the problem. Here, listen very carefully. If you read the entire history of India also, we have monarchs. We have Raja, Maharaja, Maharaja Dhiraj.
Whether you go to the northern India with the various is what you call princely states or kingdoms from Kanishk, Hovishkut, or you go to the Ahom kingdom there in Assam, or the Cher Chol Pandya dynasties there in south, they were all monarchs, right? And later on, it was the Mughals who intervened and then established the centralized kind of Mughal rule. Afghans and Turks, they all came. But we have hardly experienced any democratic era except the Mahajanpada era, which was dated very long back. So, and it was a very small period when Ang, Magad, Champa, and there are many kingdoms, 16 Mahajanpads, they emerged with the democratic setup. Except this very brief period, India has sustained with the monarchy, and the element of monarchy are equally present there in Southeast Asian nation. आप देखेंगे थाईलैंड में भी आज भी किंग को पूजा जाता है. King is very authoritative in Thailand. He is respected there in Indonesia. The king is respected there in Malaysia, right? So we have a setup of monarchy. Monarchy was there in Myanmar, so it never allowed the kind of a democratic setup. That's what in Myanmar, from 47 to 62, and from 62 to till date, it's military government which is controlling, because it's chaotic. They have never seen the democratic setup. It's chaotic. In Pakistan, it's chaotic. Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. So we have not experienced, and whatever elements of democracy was introduced either by the European powers or the colonial masters as such. So India was under the British control for 200 years, we know pretty well, but the other countries also, whether it's Indonesia, Thailand, or the neighboring countries, they were under the colonial exposure, if not control. And that's what they have experienced democracy rather than having originally in that. So coming back to the point, the very first thing is that either you have exposed, you got it experience from the colonial masters there, or you have evolved your own version in your country. It's basically that we want democracy. And that's the ultimate aim of all the nation states for which the Arabs, the last spring, the Arab Spring, has also democratized. So we now have hardly 2-3 countries left there, which are basically the princely states, like the Empire of Brunei, which is under the control of one kingdom, and the Sultanate of Oman, right? So there are few countries or nation states left with that kind of monarchy or aristocratic setup, right? Most of the countries went for democracy. It's very good. So we need democracy because democracy gives us space. That's the beauty of democracy. So I also like that kind of democracy. So sometimes it seems that the people are not happy when the emperor or the political setup tries to control the power in its hand. Many times the situation went into trouble. Last 2-3 weeks, Iran is burning. You know, it's a very contemporary. Iran is burning, and you can see the slide itself that how many of people were detained and killed there in Iran. The number is now skyrocketing. Massive protests are going there because the prices of the common commodities are sky high. The law and order is all what you call lost. Rampant corruption in the bureaucracy, and the prices of almost every commodities are what you call controllable. So that's what Iran is now under the next is a troubling country. So many times it's said that because of the Khamenei government that they have brought the element of autocratic rule. तो कोई भी नहीं, अरब स्प्रिंग में जब सारी व्यवस्था को उखाड़ दिया और वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना कर दी, तो ईरान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द अदर डिस्कोर्स आल्सो व्हिच आर कमिंग कि ईरान इज बेसिकली काइंड ऑफ कंट्री व्हिच इज now victimized by the unstable elements which were introduced by the American intelligence there. These are allegations. I'm not supporting one side or the other. These are the stories and narratives or the theories there. So which says that Iran become unstable when American forces, CIA or whatsoever intelligence forces are making this country unstable. What could be the reason for American intervention? Everyone knows that the American longing towards establishing as a supreme power. तो अमेरिका का तो एक हंगर है ही that it wants to establish power.
और यही कारण है कि अमेरिका इसमें मिडिल ईस्ट में और अरब वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि अमेरिका कैन गेट ऑयल एंड इट्स ओन whims and fancies, right? But what my point, still I'm holding the same point, that people want democracy. Iranian governments have not given that decentralized concept of democracy, over centralization of power at the Khamenei, and the violations or contractions. You have seen the slide topic when I started with contradictions, conflicts. So Iran has somehow restrained power to the common people. Women were not given right. So women were what you call the first stakeholders, those who went on the roads against the Khamenei government there. Iran is unstable, and there are stories that after the American government can any point of time intervene in Iran. So there are many factors that drive America to go there, whether to get the oil or to get the access to the West Asia or the neighboring countries there. So to control the Islamic world, which is basically holding a lot of the natural resources, critical minerals, rare earth there. So American interest, it's all about the money. It's all about economics that drives the politics there, right? But my still point is there, where is the democracy? The kiosk is okay, it's introduced by America, but where is the democracy? It means some fundamental problem rests there in Iran, there, that the rights were not provided to the people, they were not provided to the women there. That's what these agencies, they fruitfully seeded the kind of environment there, that the people are coming on roads against the government, right? अमेरिका ने किया, बट अमेरिका कैसे किया? कुछ व्यवस्था में खराबियां थी तभी तो किए. That's the problem. America, the way America is heading towards, right? What America did, 2 weeks, hardly 2 weeks, abducted the president Nicolas Maduro. Maddie was abducted, arrested on fanciful charges. Where is the international law? Where is the world order? That the state are going to stay in peace and harmony. They are not going to fight with each other. Where is the harmony? तो हम लोगों को एक सामंजस्य के साथ रहना था, और ये डिसाइडेड भी था, और हम इसी सामंजस्य से सालों भर चल रहे थे. सामंजस्य को जिसने तोड़ा वहां युद्ध हुआ. 2 विश्व युद्ध हम देख चुके हैं, और छुटमुट युद्ध हम देख रहे हैं. तो ये क्या साइन है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का, और दिस इज ओनली काइंड ऑफ इशू? So it's not a thing which is only related between India and Venezuela. Sorry, America and Venezuela. America has put its roots there in Iran. Iran is unstable. Iran आज जल रहा है, अव्यवस्थित है. American forces, American intelligence forces, American hand is alleged, पे इल्जाम है कि अमेरिका की वजह से अमेरिका करवा रहा है. और यहाँ कुछ allegations, yeah, what do you call, in a subtle way, you don't need to come out with accusation. It's proved that American forces abducted the Venezuelan president, Nicolas Maduro. Why? On fanciful charges. Why? Because Venezuelan oil, Venezuela is rich in oil. So America wants oil for its industries to run, for its companies to run, and to sell oil and to get profit. That's the driving factor, that America is in making Iran unstable. America is making Venezuela unstable. Iran is making West Asia unstable while supporting the cause of Israel, through which Israel is like creating trouble to Palestine for years. Right? We know the history. America already has devastated Iraq through whatever, killing the Saddam Hussein, hanging Saddam Hussein on the fake charges of stockpiles of WMD. कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन के कुछ सोर्सेज हैं, तो उसके फैंसीफुल वे पे पूरा इंटरवीन किया, 2 साल तक पूरा एक्सप्लॉइट किया, और फाइनली पाया कि उनके पास तो है ही नहीं स्टॉक पाइल. तो 2 साल तक आपने वहां पे लोगों को यातनाएं दी, लोगों को सताया, आपने उनको मारा, और वहां की विमेंस को रेप किया, बच्चों को आपने रेप किया, टॉर्चर किया, और ऑयल एक्सप्लॉइट किया. फिर वहां की कमी थी, फिर आपने अलकायदा, आप अफगानिस्तान में घुस गए, वहां भी आपने वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, वहां भी विमेंस को रेप किया, वहां भी रिपोर्टेड केसेस ऑफ हैरेसमेंट. अबू गरीब प्रिजन वाज वाइडली compared with the Nuremberg trial.
हिटलर ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम न्यूरेमबर्ग में लोगों को यातनाएं दी, जो नॉन जर्मन्स थे या जो स्लेव्स थे या जो प्रोस्टिट्यूट्स थी या जो नॉन नेशनल थे, डिस्प्लेस्ड पीपल थे, माइग्रेंट्स थे, वर्कर्स थे, उन सबको न्यूरेमबर्ग में यातनाएं देके मारा हिटलर ने। वही न्यूरेमबर्ग वाला सीन अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्रिएट किया, अबू गरीब प्रिजन में खाना नहीं दिया, टॉर्चर किया, बिना कपड़ों के रखा, inhuman treatment. When they talk about human rights, America is the country which talks a lot on human rights discourse, right? So where went the human rights? So that's another part of the story. So what my point is that on the one side that there is democracy, that the countries are going towards democracy, like the Arab Spring, like the Iran. On the other side, America is expressing its more power. It's becoming more assertive and beyond control. American forces, okay, there are allegations that they unstabilize Iran, but Venezuela, they did it. They violated the principles of international law. Venezuela, किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति को आप उठा लेंगे, that's a illegal practice, which is not admirable anywhere in the civilized world. There are there are accusations that the American forces worked there in Nepal also, very stable Nepal, because they wanted to somehow make the South Asia unstable and to create problem for India, because the way India and China are heading towards. So Nepal is basically sandwich between India and China. तो अगर नेपाल को अनस्टेबल कर देंगे तो चाइना विल बी ऑल्सो बॉदरिंग अबाउट नेपाल एंड इंडिया विल ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट नेपाल. So both the countries will be busy in their own affairs, and it will be troublesome for their economic growth. And then because India and China are having unprecedented economic growth, which is now crossing beyond the American economy, right? The trillion economy which India and China has acquired in last 2 decades is like unbelievable. तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का फियर तो है ही. देखो अभी आप भूल जाइए, इंडिया और चाइना की रिवेलरी तो है ही, बट इंडिया और चाइना को अमेरिका एक ही नजर से देख रहा है कि बोथ आर नाउ बिकमिंग बिग जाइंट, बिग सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर. तो कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इंडियंस आर एवरीवेयर, इंडियन डायस्पोरा आर एवरीवेयर, ब्यूटीफुली दे हैव मैनेज्ड द इकोनॉमी. Chinese are everywhere, but still their economy is far strong and it is immune, right? The Chinese currency is immune, so their economy cannot be collapsed or controlled by American forces. Whether you make dollar as the exchange currency for oil, it does not matter for China, right? So to unstable China and India and to bother them, the Generation Z was inflicted with the elements that Nepal is again a corrupt country, and you go on the streets and that's the people are coming on the street in Nepal, destabilizing the entire state fabric there. Or they also want democracy. They are not happy with the kind of monarchical rule which is supported by many generations there in Nepal. So they wanted the democratic elements there. It could be a reality. So like Arab Spring, the Iran or the Nepal or Bangladesh, the recent, they either they want democracy, a colorful revolution, जो रंगीन बोला जाता है, रंगीन क्रांतियां हुई यूक्रेन में, अजरबैजान में, आर्मेनिया और मोल्डोवा और आसपास के कंट्रीज में जो रंगीन क्रांतियां हुई, जिनको कलरफुल रेवोल्यूशन बोलते हैं, उससे डेमोक्रेसी आई. तो लोगों में अवेयरनेस हुआ कि नहीं, जो राजतंत्र है या जो निरंकुश तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल लिबर्टीज को हनन हो रहा है. हमको भी आजादी चाहिए, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम भी ट्रैवल करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, हम भी उसी लेवल पे इंजॉय करना चाहते हैं जिस लेवल पे अमेरिका या कोई भी स्वतंत्र प्रजातंत्र राष्ट्र कर रहा है. ये भी एक कारण हो सकता है बांग्लादेश का, ईरान का या नेपाल का लोगों का प्रजातंत्र के प्रति अगड़ विश्वास और निरंकुश तंत्र के खिलाफ आवाजें. बट शेख हसीना या जो भी जो राष्ट्र के जो खमेमी है या कोई भी है, वाकई दे डिजर्व द सेम ट्रीटमेंट. दैट वी हैव टू फाइंड आउट वेदर. देखिए अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है कि अरब स्प्रिंग जो हुआ उससे जो अरब वर्ल्ड में हुआ, बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी देयर, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू हैव डेमोक्रेसी, दैट्स वन पार्ट.
Here people are not happy, or they were somehow incited. उनको भड़काया गया by the American forces. But Bangladesh, Nepal, or Iran cannot be equated with the colorful revolutions there in Arab world. They're a separate story. So the narratives are going that the people wanted to go with democracy. That's what they are against this thing. That's what people are coming on roads. Or it is the kiosk which is created by America in Iran, in Nepal, in Bangladesh, and now in Venezuela. So it is basically America which is wanted or asserting it's a greater role, that it wants to control the entire political economy of the world. तो ये समझने की हमको जरूरत है, एक नया युग है ये. This is a new world order where thousands and thousands of children are killed in hospital. Israeli forces are killing people in Palestine, and hardly any nation. There are few like the Spain or Portuguese. The massive protest. The people came on the roads. They blocked the bridges. They protested against whatever happening there in Israel and Palestine for years. They are killing people. Yes, that cannot be justified that the Palestinian militancy is killing people there in Israel. Yes, they are killing. बट देयर आर लॉज. कानून की कुछ व्यवस्थाएं हैं कि युद्ध जब होता है तो सेनाओं में युद्ध होता है, फोर्सेस के बीच में युद्ध होता है. कुछ कानून है. अगर आप महाभारत का भी युद्ध देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में भी कुछ कस्टमरी प्रिंसिपल्स थे कि युद्ध होगा तो एक रणभेरी बजेगी, उसके बाद युद्ध स्टार्ट होगा, सेनाएं आपस में लड़ेंगी, प्यादा प्यादे के साथ लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार के साथ लड़ेगा, हाथी वाला हाथी के साथ लड़ेगा. कोई निहत्थे पे वार नहीं करेगा. अगर हथियार है तो ही वार करके मार सकते हैं. ठीक है. महिलाओं को रेप नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, हॉस्पिटल्स को नहीं तो करेंगे. युद्ध केवल युद्ध का एक पीरियड है. शाम होगा, सूरज अस्त के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने कैंप्स में चले जाएंगे वापस. पानी को कंटेमिनेट नहीं करना है, पीने का जो पानी है. रिसोर्सेस को नहीं जलाना है, जंगल में आग नहीं लगानी है. कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन रिसोर्सेस. So international law has also supported this concept of that their wars are also fought in principles. That's what. So the international humanitarian law, which is also coded under Geneva Conventions. तो एक जेनेवा में कन्वेंशंस हुई, उसमें सब बातें लिखी गई कि अगर युद्ध होता है तो आपस में राष्ट्र लोग ये चीजें नहीं करेंगे. बट व्हाट हैपनिंग देयर इन रशिया स्कूल्स पे बम गिरा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बम गिरा रहे हैं. इजराइल ने फिलिस्तीन में हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, स्कूल्स को तबाह कर दिया, बच्चों को मार दिया. What's happening? What kind of world we are making? Second World War के ड्यूरेशन में it was forces which were fighting. We were having that civilized mindset. Forces are fighting with each other on the borderlands. They were not raping women. They were not killing children. They were not attacking the hospitals. They were not attacking the civil societies there. During First World War, during Second World War, हम लोगों का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि we are attacking on the schools. We are killing the innocent people. Yes, you are having fight with the other nation. You fight with the army. You fight with the forces. You fight with the defense armament. Don't attack the innocent civilians there. There are rules of war. Right? So the kind of world order we are demeaning, we are basically leveling down on the human ground. We are going very below to the ethical parameters of war. So when this lady, Greta Thunberg, when she went with the food supply, people are dying there of starving of food. Palestine में अटैक तो हुआ ही, जब व्यवस्था पूरी खत्म हो गई तो लोग ऐसे बम से नहीं मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग. बच्चों को खाना तक नहीं है, ब्लॉकेट्स कर दिया गया, कहीं से खाना सप्लाई नहीं जा रहा है. And civilized nation, European countries, they symbolically protested. Few protests that went there in Europe, but who sent the food supplies? None. So Greta Thunberg with a few supporters, when she went with a lot of support, she was arrested and detained there. What kind of world we are making? What kind of world order we are designing in the system? And when Donald Trump came to power, he says that I will not be a peace builder. I will be peacemaker.
पीस मेकर मतलब अगर कहीं पे युद्ध है, कहीं पे लड़ाई है, तो हम लोग बम गिरा के फोर्स का यूज कर कर उनकी लड़ाई खत्म कर देंगे। पीस बिल्डर में कन्वर्जेशन से, बात कर कर, सहमति से, संधि से, एग्रीमेंट, पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर पीस बिल्डिंग। बट पीस मेकिंग यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ प्रेशर, वी कॉल इट हॉकिश अप्रोच। हम पूरे वर्ल्ड को यूनिफाई करेंगे। कौन, किसने आपको इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दिया? आप ठेकेदार हैं वर्ल्ड के, नो? बट दैट वाज द ओपनिंग स्पीच ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन द सेकेंड टेन्योर लास्ट ईयर इटसेल्फ। तो ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका इज गोइंग टू वर्क एज अ यूनिफायर, एज अ पीस मेकर। क्यों भाई? ये तो रीजनल इशू है, चाहे वो इशू इंडिया पाकिस्तान का है, या वो इशू बांग्लादेश और थाईलैंड का है, या थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई है प्रिय विहार टेम्पल को लेकर। उनका आपस का मैटर है। नागानो करोबा को लेकर अर्मेनिया अजरबैजान में लड़ाई है, जिंगजियान को लेकर चाइना में इश्यूज है, चचन्या को लेकर रशिया में इशू है, साइप्रस में इशू है, कुर्दिश और ग्रीक पीपल्स को लेकर। हर जगह कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं। हु इज द हेल अमेरिका इज टू इंटरवीन? दैट्स व्हाट अमेरिका इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल प्रिंसिपल। द वे दे वांटेड टू असर्ट, कुछ नहीं करना है अपने लोगों को, बस पूरी दुनिया को तबाह कर देना है ताकि अमेरिकन खुश रहे। कैसे पीस मेकिंग करनी है? ऐसे पीस मेकिंग करनी है। मतलब that's the way, that the kind of peacemaking on the other side, rather than supporting for the cause of peace। आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं अमेरिका। Then on the other side, tariff, when the countries and the war is going there, the Russia-Ukraine war, now the Venezuelan issue, the Iranian issue, Bangladesh issue, Nepal issue, ऐसे issues में जब economies are collapsing, the gold rates and silver rates, why they are skyrocketing? Because nobody is now, everybody is having fear that war is going. So they wanted to somehow give, invest on the safe side of the money. Everyone is investing in gold and silver. 1 year, 1 lakh rupees inflation. That's go beyond the control of the government there. What America did, or doing, not only tariffs. Yes, there are illegal migrants, but why you are torturing them, punishing them, handcuffing? हथकड़ी बांधना कानूनी तौर पे मानव अधिकार का मुद्दा है कि आप हथकड़ी नहीं बांध सकते हैं। हथकड़ी को इंडिया में भी बैन कर दिया गया है। यू कैन नॉट हैंडकफ एनीवन until a magistrate confirms of the severity of rarest of the rare crime of murder or rape. You cannot handcuff for a small crime of dacoity, abduction, or maybe hijacking or kidnapping. Handcuffing is banned in India. It's banned throughout the world. And America support the system of human rights. आपके पास अगर कोई चला भी गया इलीगल माइग्रेंट, तो आप उसको ऐसे बेइज्जत करके, अमानवीय तरीके से रगड़ के, घसीट कर आप वापस कंट्री में फेंकेंगे? या आप इतने कठोर स्ट्रिंजेंट लॉस बना देंगे कि इट विल बी अनबेयरेबल फॉर पीपल देयर टू सस्टेन? बट इंडियंस, एंड देयर आर मेनी साउथ एशियंस पीपल, those who have served the diaspora that's working there in America, they have working beautifully and they have controlled the economy. So that's what they are sustaining there. Otherwise, the way they are becoming intolerable to the people. ठीक है, हमने भी सीए एनआरसी लेकर आए, हम लोगों ने भी बिल्किस बानो उसका विरोध की, हम लोगों ने भी किया कि हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं रखेंगे। ऑलरेडी वी हैव एंटरटेन्ड 1 crore Bangladeshi, now another 10 lakh Rohingya Muslims refugees have entered in India. Yes, India also started CNRC. It's a nationalistic policy everyone is doing. So the world order, we have to understand कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, अरब स्प्रिंग हो रही है तो लोग सड़कों पे आ गए, डेमोक्रेसी करनी है। करप्शन हो रहा है तो लोग सड़कों पे आ गए, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, लोग डेमोक्रेसी ला रहे हैं। तो एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नेशन सताए हुए हैं, जहां पावर लोगों ने ऑक्युपाई की हुई है, कुछ ऑटोक्रेट्स है, वहां तो डेमोक्रेसी बना रहे हैं हम। और जहां ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, दे आर बिकमिंग मोर कंजर्वेटिव। सो दैट्स द कॉन्ट्राडिक्शन, दैट देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, देयर आर क्राइसिस, देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस। ये विरोधाभास है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां ऑटोक्रेसी है, करप्शन के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं,
लोग पूरा मूवमेंट आ गया जनरेशन जी का, लोगों ने पूरी सरकार को उखाड़ फेंका करप्शन को लेकर। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वर्ल्ड में ये अमेरिका हैज अबडक्टेड वेनेजुएला, सॉरी, so the world has become the world has become conservative. They are becoming ultra national. So the way we are dealing with the migrants, the way we are dealing with diaspora, now there are reported violence against the diaspora, various diaspora there in the United Kingdom, in Australia. The outsiders are beaten by the localites there. ठीक है, if you are illegal immigrants there or your visa has expired or you are from outside, but you would have detained them in a suitable principles of international law rather than handcuffing and यातनाएं देकर हथकड़ियों में पैर बांधकर वापस भेजा. This is not the way. The human rights scholars criticize that. Where is the law? Where is the civilization? Where is the America? We have said that America is one of the largest democracy there in the world, or which causes for the democracy. एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये हरकतें करते हैं. India out. You know the India out policy there, what happens there. So a small country, yes, they went for India out. Why? Whether it's the American forces or they themselves are doing it. So the world is becoming more conservative. The level of wars are went beyond the ethical parameters. We have become ultra nationalistic. We are not listening to the others. So, and everyone is doing that. Everyone is doing that. Most of the countries are there. America saying that we want to spend a single penny. अब हम पैसा खर्च ही नहीं करेंगे विकास के लिए, हम वहां देखेंगे जहां अमेरिका का इंटरेस्ट होता है. जापान का छोटा सा शहर है क्योटो. 1997 से 95 से 97 तक बात हुई और एक ट्रीटी का मसौदा तैयार हुआ. 95 से लेकर स्टार्ट करके 97 में एक ट्रीटी का मसौदा तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल. उसको इंप्लीमेंट करना था 2005 में, ताकि 2015 तक हम लोग कार्बन गैस का एमिशन खत्म कर दें. 2005 भी चला गया, 15 भी चला गया और 2025 में हमने फाइनली एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी द पेरिस ट्रीटी, वी कॉल इट पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें सब डिसाइड हुआ कि चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग कार्बन कंट्रोल करेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं, मौसम का कितना चेंजेस हो रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड वेव, एक्सट्रीम हीट वेव, पूरा अंडरग्राउंड वाटर सूख जा रहा है, पूरी साइक्लोन से पूरी मॉनसून की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, पूरी दुनिया का टेम्परेचर खराब हो गया है, अंटार्कटिका की और हिमालयस की आइस पिघल रही है, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, और पानी का लेवल जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जो आइलैंड नेशन है वो डूब जाएंगे. राइट. पैसिफिक ओशियन में देयर इज अ कंट्री कॉल्ड समोआ. समोआ में देयर इज अ माओरी कम्युनिटी. समोआ में माओरी कम्युनिटी, एशिया वॉच की एक रिपोर्ट है, 1 महीने पुरानी रिपोर्ट है, आप देखिएगा. और समोआ इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ. आप तो मैं नाम भी शायद हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे. पैसिफिक आइलैंड में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके नाम ही लोगों को नहीं पता है, जैसे नाउरू, टोंगा, वानुवातु, किरीबाती, न्यू कैलिडोनिया, समोआ आइलैंड, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया. तो ये आजाद देश है, इंडिपेंडेंट. फिजी. सो समोआ में क्या हो रहा है, माओरी कम्युनिटी को एक अपने नेशन के एक आइलैंड से ऑफिशियली अब वहां से हटा रहे हैं क्योंकि वो आइलैंड पूरा पानी में डूब रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ग्लोबल राइज ऑफ वाटर. अब तक हम सुनते थे कि राइज होगा तो नीदरलैंड्स डूब जाएगा, इटली का आधा वेनिस डूब जाएगा, इंडिया में भी मुंबई के अंदर कुछ शहर डूब जाएंगे. स्टार्टेड हैपनिंग देयर. Samoa Island, there is one island that is entirely submerged into water. Now the people, there are indigenous communities which are now shifted from Samoa to the neighboring, within the Samoa, the neighboring island, because there are many group of islands that constitute to Samoa there. So America is saying that we are walking out of Paris Agreement. 2 days back, America said that any United Nations program we won't be supporting if it is not going for the cause of American betterment. तो जहां अमेरिका का काम नहीं होगा वहां हम क्यों सपोर्ट करेंगे. तो काइंड ऑफ
conservatism, the kind of selfish orientation that's coming everywhere. On the other side, you have outreached and overshadowed the world with your penetration of a soft power there. तो आपने अपनी सॉफ्ट पावर से कैसे कंट्रोल किया? देखिए, McDonald's everywhere. We call a term called McDonaldization. Burgers, Subways, their pizzas, all America. Even the cartoons which our children and toddlers are watching, Peppa Pig or whosoever. Though we are having Chota Bheem, we are having very many cartoons which are indigenously developed. We are having local heroes, Ravan, Krish. But we see that it's the Avengers which are shouldered with the duty to save the world. Avengers को पूरा जो सुपर हीरो है वो Avengers है. Avengers में previously it was Captain America, sorry, Iron Man, now the Captain America. America will lead and Captain Marvel is also, they will lead और पूरी दुनिया को बचाएंगे वो लोग. America will lead. So what we are teaching to the brains, little children, कि America will save the world from Thanos. There. The American food, pizza, burger, coldie, Pepsi, cola. But Indian food chains or the indigenous food, except the China, the Chinese town, the chow means of the Chinese food, it went there like a wildfire throughout the world. So except China, no Asian or African food got so globalized. Even the Asian Chinese cartoons are also now outreaching the Indian screens there, the little screens of social media platforms. So now we are having cartoons, we are having soft power. These are the agencies of soft power. Then how you control the children's mindset, how you control the food habits, how you control the dress habits. So when you own, you control. So they are owning these things and they are controlling the entire elements of soft power. They're doing it beautifully. The world is becoming more conservative. When the Madras High Court has given the verdict that the Indian education system and the medical universities are queerphobia, are queerphobic, that the transgender people are not allowed to study, they are not allowed to own property, they are not provided with rights. So what government is doing, finally with the bill which was initiated by DMK government and then it got to the president accent after Lok Sabha and Rajya Sabha, it got a establishment of the transgenders persons bills 2019. तो 2019 में हमने rights दिए transgender को, but still there are few rights which are not allowed and permitted. The right to marriage and right to have adoption. The government has given a kind of statement that we are not ready to allow kind of gays and lesbians marriages and to allow them the adoption rights there. That's the government stand. When it went to the Supreme Court for litigation and coming out, because Supreme Court का जो decision होगा, that is also law. Supreme Court has also taken a political stand. हम नहीं जानते हैं. Government से बोलिए comprehensive bill बनाएगी. That's good. America has scrapped the third gender. Recently, massive protest went there in Portuguese there, Budapest. People came on roads. They are saying that these transgender people, they will corrupt the entire moral system of the entire Portugal. So we are banning the LGBTQI rights. So India has given the constitutional rights to LGBTQI. It's very much legal to speak on that way. But it took many years there. Still few rights they are demanding there. The PM Arogya Yojana also covers certain medical surgeries there which are provided to the transgender people, the hormone surgery, as we call it SRS there. So the point is that the world is becoming more ultranational, more conservative, and more kind of a radical, and the parameters are becoming sub-standard or subhuman. That's what the other people, the LGBTQI, took them from 1967 Stonewall movement, 1965 से लड़ रहे हैं और अब 25 पे आकर लगभग 70-80 साल के बाद अब उनको लगा कि जितना उनका पूरा जो स्वतंत्रता के लिए अधिकारों के लिए जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई. एक दिन में अमेरिका ने स्क्रैप कर दिया, पुर्तगीज ने स्क्रैप कर दिया. Many governments, Islamic world तो are immune. That's a separate story. They don't give rights to LGBTQI.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सोचा गया कि अब तो लड़ाई होगी नहीं, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सबके पास हथियार है, कौन जाके लड़ेगा। मैनी थियोरीज केम आउट कि अब लड़ाई नहीं होगी। नो, बिकॉज सबके पास हथियार है, सबके पास हथियार है, तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। अगर आप मुझे मारेंगे तो मेरे पास भी उतनी ही ताकत है, मैं आपको मार सकता हूँ। जब आपके पास और मेरे पास, दोनों के पास इक्वल ताकत है एक दूसरे को मारने के लिए, तो फिर हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। दैट्स बैलेंस ऑफ पावर। बट स्टिल, एंड देन द वर्ल्ड विल बी मोर सिविलाइज्ड। सब लोग डेमोक्रेसी है, सब लोग सही चीजें सोचते हैं, सही चीज समझते हैं, इसलिए अब युद्ध नहीं होगा। बट रशिया यूक्रेन, इसराइल पैलेस्टीन, क्लियर राइज ऑफ कन्वेंशनल वॉर्स जो पहले होता था। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टुवर्ड्स मॉडर्निटी, और वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्ट्रडिक्शन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिग्रेसिव स्टेट। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम उसी युद्ध, जिस युद्ध से हमने सीखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हजारों लाखों पुरुष मारे गए, तो महिलाओं ने अपने बाल काट लिए। महिलाओं ने पहली बार अपने बाल काटे। महिलाएं घर से निकली, ऑफिसेज में गई। क्यों? क्योंकि पुरुष मर चुके थे युद्ध में। उन्होंने एग्रीकल्चर संभाला, उन्होंने गाड़ियां चलाई, उन्होंने ट्रैक्टर्स चलाए, उन्होंने इंडस्ट्रीज चलाई। इसीलिए यूरोप की महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। दे आर डेटाज ऑफ रेप, that is separate thing. Datas of violence on women, that's separate thing. But the way they enjoy the rights there in Europe, the women enjoy the freedom they celebrate, it's not there in African, Asian, or other society except the tribals there. So the world is going towards regressive state. And what America has created, that there is a monster. The monster is China, which will be devastating. Many scholars who are listening to me, I don't know how many of you have off your screen. Yes, we are also swayed by the same principle, that there is a ghost, the Chinese ghost, which will eat India. We are also driving with what America is teaching the world. And we are now taught, we are the first student of the American class. And the lesson is that China is a ghost. Honestly saying, honestly, very honestly, starting a 1 hour back, I told you it's America intervened in Iraq. America intervened in Afghanistan. America, through Israel, creating problem in Palestine. America abducted the Venezuelan president. Where is China? China has not abducted anyone. Small Taiwan, this small Taiwan, with a big China, the second largest country in the planet. China can take the entire Taiwan in a one night, but China never did it. Rather, the contribution of China in environment, the contribution in science and technology, in creating medicines, in creating yarn, is unparalleled to the world. Believe me, throughout the planet, if you are knowing anyone who is undergoing cancer treatment, 99% machines are Chinese made. If you are working in an industry or a factory, 90% industries are made by Chinese. Paracetamol or whatever medicines, more than 70% chemical drugs comes from Chinese. The cloth which we wear, except the Arvind Mills that works there in India, most of the yarn is supplied from Chinese. Good or bad, that's a separate story. The small toys which the 70s or 80s, the white generation thought of, those toys are now designed and made by the Chinese now. They are flooded with everywhere. Yes, you have the policies to boycott Chinese product and to give it make in India. That's beautiful. I'm not against it. But you are helpless. The world is helpless because the development and the supply is unparalleled. The costs which are involved by other countries and the costs which China make cannot be comparable. That's what now the Apple phones or Sony's or LG's, every gadget is produced there in China. Now we have started drifting those and trying to pull those industries to India. That's good. That's really appreciating. But criticizing China, China has given loans to African continents there.
Yes, our ONG Videsh Limited is also doing it, exploration of oil and helping in the countries to develop there. Chinese did it. They sent the loans to Sri Lanka. They sent loans to Myanmar. They brought the properties there. There's nothing bad. So it's all trade because it's all business, right? Like we have sold our gold spot or Limca to Coca-Cola, right? So if we are nationalistic, we would have not sold the our Coca-Cola or our Limca or Fanta or Gold Spot or to the Pepsi Cola, but all are sold. That's business. The big giant, the big fish occupy the small fish, right? It eats there. So China has also occupied its business. It's come out with the conditions. You pay the loans, we'll develop. If you don't pay, we'll get the thing. Business, pure business. The veracity of the liberal business. Many industries are now owned. Food industries, Pepsi, Cola, or McDonald's, they own. The business is there. So that's what everyone is not having that technological, what you call, advancement to make aircrafts, right? Or the defense equipments. India is buying it. India is importing the defense equipment. Yes, we have not started many, so we have produced a good number of defense equipment, but still we are importing it, whether it's a Rafale or whether it's a whatever radar technology from Israel to BrahMos from Russia. We are doing it. Everyone is doing it, right? So the kind of fiasco, the kind of Chinese ghost, we need to understand that China cannot be parallel with America. America is more ferocious. तो जो घृणा चाइना से है उससे ज्यादा घृणा अमेरिका से होना था, बट घृणा चाइना से है. That's a separate story. You have to understand that America is doing it because जो आने वाली जनरेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलेगी, जो ई गवर्नेंस पे, एनर्जी पे चलेगी, उसके लिए आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, उसके लिए आपको बैटरीज चाहिए, बैटरीज के लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए. और नाउ क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी लिमिटेड, रेयर अर्थ्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स. So African continent is the next where America will be intervening, and it has started going there. Has made agreements, forced countries, manipulated with many things to get those critical minerals there. And for the world to keep busy, the narratives of Islam threat, Islam is this and that. That's okay. The kind of they are manufacturing the consent. Islamic world is dangerous and this and that. Right. So narratives so that you'll keep busy in hating the Islamic world or the Arab world, and meanwhile we'll occupy all the oil either from the Islamic world or from the non-Islamic world. Right. So we get the oil or the other critical minerals if it is needed there. So America is doing beautifully, keeping all the countries busy in hating the Islamic Arab world, and then intervening in Venezuela, intervening in Iraq, in Afghanistan, and wherever it wants. It's playing on the whims and fancies there. And we are taught through the social media, controlled the Wikipedia generation Z, the generation Alpha, that these generation will be controlled by the Wikipedia. If we face any difficulty, Wikipedia. So this Wikipedia generation and Wikipedia is owned and controlled by America. So we are somehow, our thoughts are controlled by America. So you have to decide, and we have to decide the way we are heading towards the world, what kind of world we are making. So this will be, there are theories के द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया में एक बायपोलर वर्ल्ड बन गया था, दो खंबे, दो पोल हो गए थे. शीत युद्ध का टाइम था जब अमेरिका और रशिया दो वो थे पिलर्स, और उन पिलर्स के बीच में गुट के बीच में हमने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लाए, गुट निरपेक्ष लाए, नासिर, टीटो और नेहरू के एफर्ट से. दैट इज मैग्निफिसेंट आइडिया. बट वो दो गुट थे. उसके बाद जब रशिया ब्रेकअप होता है 21 दिसंबर 1991 में, CIS कंट्रीज बनते हैं, 13 राष्ट्र टूट जाते हैं रशिया से, तो वर्ल्ड हैज बिकम यूनिपोलर. अमेरिका वाज यूनिपोलर, बट देन nuclear weapons, China, another power, then India, Israel, and many countries, France, they rose to power. But who is governing the world? Whether Israel or France or India or maybe Brazil. Yes, we are having a lot of resources. We are having magnificent economy. We are having diaspora, remittances.
But the way the world is controlled, the way the world is designed, is now the tripolar world. The tripolar world, America, Russia, and China. So those who were saying that the Russia has become obsolete after the collapse of the USSR and the rise of the Russian Federation, now they have to mind it that now it's not obsolete. Russia has started asserting its. It was busy in Chechnya. It was busy in own game, but now Russia has started asserting that yes, Russia is there. The Ukraine episode. Russia said it clear. It gave the message to the world. Yes, we are there. We are not absent. We are present. Then America, and the third is China. And the tripolar world, there are ambitious third world through IBSA, India, Brazil, South Africa, through SAARC, through ASEAN, through NAFTA, there are many organizations there that work. But this is ambitious third world, which are having ambitious, they are having good development. Singapore, Malaysia, Philippines, the economy there has outshined America. अब a country say Singapore or a small country say Philippines or South Korea is having development that is at par with America. America के समतुल्य उनका आर्थिक विकास है, but are they becoming America? No. They are having democratic elements. They are not going out of control. They are not governing that world. So that's good that the third world is having economy and everything. They are having diaspora. Everywhere you find there in America, there are Pakistanis, there are Bangladeshis, there are Indians. But are they controlling the America like the Canada? No. So this is the world affairs which is going there. And wherever they are going, wherever the America is heading, whatever happening throughout the world, it ultimately resulted into the crisis of human rights that I will explain in the second session. So it will be 1 hour, 20 minutes almost. So we'll take a 15 minutes break. I think it's 12:20. And 10, 15 minutes we can take a break. Or before that, just give me 1 minute so that I can... Yeah. So for this session, what my point is that throughout the world order, which we have decided for years to come, the ultimate scene which comes there is that there are countries like through Arab Spring, which are having longing towards democracy. And there are other group of countries which are also heading towards a democratic setup, maybe Iran, maybe Nepal or Bangladesh. But they are fueled by the American forces. They are not going for democracy. There is a kiosk which is made by America, unlike the Arab Spring, which was not an American episode. It's an American kind of episode. The acquisition says that. And it proves up pretty well because America has already abducted the Venezuelan president. It is about, it's threatening, America is threatening the Iranian presidents there and the Iranian government for the corruption and this and that. So the way America is heading, we have created a world where our values, our ethical parameters are now getting below. America is slapping tariffs, the way India is now facing tariffs from the American companies there. And everywhere America started slapping tariffs. And then the kind of ultranationalism, that the violations of human rights and the mistreatment of the migrants workers, that the blue collar jobs there. And the rise of ultra-nationalism, which is also there in America and the neighboring countries. So the world is heading where the things are now getting somehow going beyond the law, beyond the customary practices. Some ethical, some human conditions are built there. And the world is becoming tripolar with America, Russia, and China deciding about the trade, economy, and political affairs, where America is predominant in political scenario. China predominant in economic trade and exchanges, and Russia is the third player, but it's there to show its presence, that do not dare to come out or have a tussle with Russia. It's having the largest mainland and the resources there in the world. So we are heading towards the ultra-nationalistic, conservative nationalism, where the democratic goals on the one side, we are heading towards democracy. On the other side, we are somehow becoming autocrat in
the world, we are creating a kiosk in the society that is very problematic for the world. So in that, it's a very, very dangerous times we are living. So it's not Iran, it could be any country. So that's what recently the RSS there in India has given directives to the government, and it has given a clear warning that what happened there in Nepal, the Generation Z, the corruption, the government should take care of any corruption shall not be entertained in India. We should be responsive to the forces, and if there is any discontent, then it should be addressed in a suitable ways. So that's a kind of a fear with a country which is having experience of almost many years of democracy and very good example of democracy which we have set up throughout the world. But still, there could be chances that American forces might trigger discomfort for the political setup because India is heading in its own way, which is problematic for the America in South Asia because we are next to the Indian Ocean, which is harboring the largest sea trade routes there that goes from the state of Malacca to the Indian Ocean. So India is next to the Indian Ocean. So we are littoral state. We're next to the largest consignment. That's what we are worried. America has established a quad that it will take care of if there is any threat to its business and other trade routes there. Quad. So what America, in a subtle ways, that's what America came to India, showing a friendly gesture, but now doing that kind of a mischievous things. The treatment it has given to the Indian diaspora there and the way traffics are slapped, it's unbelievable. It's basically the distrust which now we are facing. The kind of uh, behavior which America did it is unbelievable for India. So in that way, that has not harmed India much, but still it's an alarming that we need to be vigilant of American forces working there. But the world is now becoming very dangerous place. The way countries, the way civil liberties, the way human rights are compromised is unparalleled. So one need to be very cautious about what's happening in the world. So with that, I think I have done justice to the world affairs or the international world order, which is now very problematic for us to understand. So with that, if there will be questions, queries, we'll address them in the last of the next session. But we'll take a 10-15 minutes break. So it is now 12:23. So we can take a 10 or 15 minutes break, 15 minutes break probably. So we'll join at 10:35 or 12:35. Right. So 12:25 to 12:35 or 12:40, we'll take a 15 minutes break. So we'll assemble at 12:35, right? So take a 10 minutes break, be there on your data and just mute for your loudspeaker, your microphone, and then we'll continue at 12:35. So till that, take care. Bye-bye.
So, welcome back, everyone. Is that audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, I was talking on the new world order and discussing about the crisis that the way world is heading towards, the way things are happening throughout the world. So, so one need to be very cautious and one need to be very much vigilant about what's happening throughout the international platform, what's going on there in the world. And one need to understand that where our nation and state is standing. So if it's yesterday the Iran, it could be the other country today. So we have to be very cautious. We need to understand the nuances of what's happening there in the world, right? So let's start with the other dimension. Just give me, there is some issue with the slides. Yeah. So whether whatever happening throughout the world, so whether the America is becoming more assertive, that will be dangerous for the world, or the way China's economic control over Asia and the African continent is also many times theorized कि उसमें भी खतरा है कि चाइना क्योंकि कभी भी चाइनीज जाइंट है वो अमेरिका की तरह बिहेव कर सकता है तो चाइना के साथ भी इक्वल थ्रेट है और अमेरिका के साथ भी इक्वल थ्रेट है रशिया के साथ हो सकता है कि दूर किसी देश को जैसे अफ्रीका के किसी कंट्री लाइक सूरीनाम को खतरा नहीं होगा बट यूक्रेन को तो खतरा हो गया रशिया से सो बिग पावर्स आर लाइक स्टेइंग विद बिग पावर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्राइपोलर वर्ल्ड हुआ है तो ट्राइपोलर वर्ल्ड अपने ही तौर तरीकों से गवर्न कर रहा है अपनी ही विन फैंसीज से वर्ल्ड को चलाना चाह रहा है और जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ये लोग चैलेंज करके काफी हद तक उस वर्ल्ड ऑर्डर को इन लोगों ने खराब कर दिया इन तीनों देशों ने और एक कन्वेंशनल वॉर्स जो हम लोग अब मानते थे पिछले 40-50 साल में कि अब ऑब्सोलीट हो जाएंगे countries won't fight. At least we are civilized. We are more bothered about economic development. We are more bothered about the way the development is required. And then the human development was our primary concern. So states are securing their borders. They are buying weapons. They are into arms and defense procurement. But that's a separate story. That leads to a balance of power theory. But here, what's happening throughout the world is now unpredicted. So that's what, and whatever these countries are doing, whether it's ultranationalism or whatsoever, it ultimately results into crisis of human rights. That's the other part of the story, that the world has demeaned the human rights in its own ways. If America is coming out with more tariffs to protect its own industries, these tariffs results into many producers, industrialists, and many organizations where people are now left without any jobs or without any productions, or there are severe market transactions and bank liabilities that ultimately drain their entire savings and that results into collapse of their businesses so that will be drastic so it many times it leads to committing suicides right and then the torture the American and other countries are doing with the rise of this ultra nationalism. The migrants are treated there with multiple stringent regimes of visa. So that's again the violation of human rights there. The way LGBTQI and third genders is scrapped there in Portuguese, there in
America and many countries are now standing against the LGBTQI is again violation of human rights there. Ukrainian civilians or the Palestinian civilians are attacked by Russia and Israel is violation of human rights there. The president is abducted and the entire state is at ransom, and it's now the people are on the roads. It's chaotic, and then the forces are there. It's again the human rights at compromise. Fundamental freedoms are lost there in Iran, Nepal, when the parliament building was burnt there, and Bangladesh, when Sheikh Hasina's residence was all demolished and the entire bungalow was broken down into pieces. It's all violation of human rights, fundamental freedom, and degrading of human values there. That to what level we have went down. We are killing our own political masters. We are demolishing the property there. We're killing school children. It's all violation of human rights. The second topic, which will go with this hour, will be talking about what human rights are and what human rights mean to us, how they evolved, what are the theoretical understanding of human rights, and why we need to concern about human rights. That these facts and these events which are happening throughout the world are creating trouble that is basically contracting the space of human rights. So it's very dangerous for human rights, and human rights are essential requirement for individual freedom to sustain as a human being in a conducive environment. Many times there are scholars that comes out and ask what the rights are. So rights are basically the essential conditions which everyone needs, that I want to this, I want to breathe the clean air, I want to drink a clean water, I need to have a shelter, I need to have clothes on my body, I need a family, I need a marriage, I need cordial relations with my fellow friends, I need a society to sustain with. So that's what the rights are, basically the essential condition for an individual to sustain. These are the basic requirements, right? Fulfill those basic requirements which every individual wants. So many times they are the basic needs. Roti, kapda, and makan. So these are the basic needs. And the entitlements, that when you are doing goods, you are awarded. When you break the law, there are punishments and punitive forces. Law will have its own course to punish if there is violation or of any law. So there are entitlements, rights are privileges, rights are mandatory needs, and rights are what not. And then we have a number of rights throughout the planet. तो जैसे कुछ अधिकार नागरिकों को प्रदत्त है, जैसे अधिकार है जैसे पासपोर्ट. अब पासपोर्ट बनाने का अधिकार भारत में या किसी भी देश में वहां के नागरिकों को है. जो बाहर से जो नागरिक आए हैं या माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पासपोर्ट नहीं बना सकते. जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको तो हक ही नहीं है. तो जो लीगली जो आए हैं पासपोर्ट लेकर, तो वो भी पासपोर्ट अपना फॉरेन नेशन का लेके आएंगे. दे विल बी फॉरेन नेशनल्स, दे कैन नॉट बी योर नेशनल्स, राइट. तो सिविल राइट्स वो राइट्स हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को मिलते हैं. कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पे केवल सिविलियंस को अलाउड है. जो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जो बॉर्डर लगते हैं नेपाल से, भूटान या म्यांमार से, वहाँ के कुछ एरियाज हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आते हैं, और वहाँ पे सिविलियंस जा सकते हैं, इवन टूरिस्ट इंडियन सिटीजन जा सकते हैं, बट वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स को अलाउड नहीं है, भले उनके पास वैलिड वीजा या वैलिड पासपोर्ट है. तो कुछ जगह देर आर लिमिटेशंस देयर, राइट. कुछ लिमिटेशंस इंडिया के लिए, इंडिया में भी है, लाइक लक्षद्वीप में यू नीड टू हैव इनर लाइन एग्रीमेंट टू विजिट लक्षद्वीप. सो बट माय पॉइंट इज दैट the civil rights are for the citizens there. पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजनेस स्टार्ट करने का लाइसेंस है, रेंट एग्रीमेंट है, और किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज और बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, या कुछ भी आप फॉर्म स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग एन एनजीओ, you need to have a citizenship of a country. So civil rights are provided to citizens. Political rights are provided to obviously citizens, but that are related to politics. तो जो राजनीति से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार, नॉमिनेट करने का अधिकार, नॉमिनेटेड होने का अधिकार, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आपको वोट देने का अधिकार,
और राजनीतिक व्यवस्था के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार, इलेक्शंस कराने का अधिकार, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार। तो जो राजनीति से संबद्ध जितने भी अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। समान रूप से जो समाज से रिलेटेड अधिकार होंगे वो सामाजिक अधिकार, जो अर्थ से रिलेटेड होंगे वो आर्थिक अधिकार, और जो संस्कृति से संबंधित होंगे वो सांस्कृतिक अधिकार है। कल्चरल राइट, जैसे गणपति महोत्सव है या तीज का त्योहार है या ईद उल जुहा का त्योहार है, तो वहां पे एक राष्ट्रीय हॉलीडे होगा, छुट्टी होगी। उस अवकाश के दौरान आप अपना जो सांस्कृतिक या धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। आप उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेशंस कर सकते हैं, पुलिस प्रोटेक्शंस भी मिलता है आजकल तो प्रोसेशंस को। तो ये सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार भी है। तो जब भारत आजाद हुआ या कोई भी राष्ट्र आजाद होता है तो सबसे पहले राजनीतिक अधिकारों की मांग होती है। हमने भारतीय इतिहास में पढ़ा कि 19वीं सदी के जो नेशनलिस्टिक फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें जो इनिशियली नेहरू रिपोर्ट से लेके, वर्धा पैक्ट से लेके, कैबिनेट मिशन में हमारी जो इनिशियल डिमांड्स थी वो ये थी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस में जाएं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपर हाउस में जाएं, हमको डिस्कशन करने का अधिकार हो, हमको बिल पे साइन करने का अधिकार हो। तो सारी बात राजनीतिक अधिकारों की हो रही थी, नागरिक अधिकारों की हो रही थी। और जब राष्ट्र आजाद हुआ तो हमने सबसे पहले बोला कि हमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिल जाने चाहिए। तो आप देखेंगे संविधान हमारे, जो भारतीय संविधान है वो दो पक्ष में, मतलब दो पेयर्स में इम्प्लीमेंट होता है। तो इनिशियली जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान तो पाएंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 14 और कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो गए थे नवंबर में, और कुछ अधिकार थे जो 26 जनवरी 1950 को अधिकार इम्प्लीमेंट हुए। तो कुछ एक पीरियड है, एक डेढ़ साल का और कुछ महीनों का, जिसके बीच में ये संविधान हमारे डिफरेंट फेजेस में इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले नागरिक अधिकार हमको मिले, तो सिविल और पॉलिटिकल अधिकार सबसे पहले मिले, इसलिए इनको पहले जनरेशन का अधिकार भी कहा जाता है। और जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने अपने उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात कही कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग अ राइट टू वोट अ पर्सन हु इज स्टार्विंग ऑफ फूड। भूख से मरते हुए व्यक्ति को अगर आप राजनीतिक अधिकार दे देंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो तो अपना मताधिकार बेच देगा चंद पैसों के लिए, वो अपना अधिकार बेचने के लिए इस दयनीय स्थिति में है। तो इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद बहुत इंटेलिजेंटली जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि हमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार तो 1 मिनट में मिल गए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा लाल किले पे फहराया, जब भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, हमें सब अधिकार मिल गए, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, क्योंकि उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो जो सबसे ज्यादा धन का व्यय है वो होता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार देने में। अगर आप छुट्टी देते हैं, सरकारी छुट्टी देते हैं, तो हजारों करोड़ों का जो व्यापार है, ट्रांजैक्शन है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो कल्चरल अधिकार, एक त्योहार पर आप वो त्योहार, हमारे यहाँ डिफरेंट मत है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो होली की भी छुट्टी है, दिवाली की भी छुट्टी है, तो ईद की छुट्टी है, तो गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, तो हमारी क्रिसमस डे की भी छुट्टी है। तो एक छुट्टी करने का मतलब करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन का लॉस होना, क्योंकि वर्कफोर्स, बिजनेस, इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं छुट्टी से इम्पैक्ट होती हैं। फिर आप अगर किसी को आर्थिक अधिकार देते हैं तो उसमें भी करोड़ों रुपए का पैसा खर्च होता है। जैसे आप वो कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए, आप रोड्स बनाते हैं, आप व्यवस्थाएं बनाते हैं, दुकानें अलोकेट करते हैं, हाट को रेगुलर करते हैं, उस जगह सरकार का काफी धन व्यय होता है। तो आर्थिक अधिकार में और सांस्कृतिक अधिकार में बहुत पैसे का खर्चा होता है। सामाजिक अधिकार में भी बहुत पैसे का खर्च होता है। अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो ऐसे मिशन चलाते हैं, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हम लोगों ने चलाया, अभी एनईपी के थ्रू भी हम लोग नई नई एजुकेशन पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। तो सामाजिक विकास के लिए भी जब नए नए कानून लाए जाते हैं, नए नए विधेयक इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उसमें हजारों करोड़ों और अरबों रुपए का खर्चा होता है। तो जहां पैसे का व्यय होता है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सॉरी, सांस्कृतिक अधिकार है, वो बाद में आए, इसलिए उनको सेकंड जनरेशन राइट बोलते हैं। और जब धीरे धीरे हमने सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे विकास कर की तरफ बढ़ने लगे, देन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल राइट्स। दीज आर द थर्ड जनरेशन राइट्स, कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज द वे ग्रीन हाउस गैसेज आर इम्पैक्टिंग एंड द वे द क्लाइमेट एंड
और जो मौसम और पर्यावरण की जो चीजें व्यवस्थाएं खराब हुई हैं उससे कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। तो उस हार्म्स को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, रेसिस्टेंस करने के लिए हमको इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा। तो अब इन्वायरमेंट की भी बात थर्ड जनरेशन राइट्स की तरह आ रही है। तो जो इस स्लाइड पे कहने का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि ये एक विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, जैसे हमारे पास राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक अधिकार है। और वैसे ही इन अधिकारों का और वर्गीकरण हम पाते हैं। जैसे कुछ अधिकार को नेगेटिव और पॉजिटिव वर्डेड कह दिया गया। नेगेटिव राइट्स है, कुछ पॉजिटिव राइट्स है। पॉजिटिव राइट्स वो हैं, अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना चाहेंगे, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, संविधान की नीति निर्देशक तत्व में है, जो अनुच्छेद तो 39 से लेके 51A तक आते हैं, जिसमें कि सरकार और राज्य ये बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो महिला को मैटरनिटी लीव मिलेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वर्क में भी हेल्प करेंगे, इंडस्ट्रीज के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग SC ST के लिए भी काम करेंगे, हम विलेज पंचायत को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड्स लेकर आएंगे, हम लोग अलग अलग व्यवस्थाएं कर कर ऐसी राज्य विकास की बात करेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल जेंडर की बात हुई, इक्वल लेबर की बात हुई, इसमें बात हुई कि आर्थिक और सामाजिक भेदभाव है या विभिन्नताएं हैं उनको खत्म किया जाएगा। और स्कूली छात्रों को या जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके उत्थान की भी बात की गई। तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं, तो इनमें पॉजिटिव अधिकारों की बात होती है, हालांकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। और कुछ नेगेटिव राइट्स हैं, अब जैसे संविधान का अगर आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि भारतीय संविधान में आप अलग अलग खंड हैं जिनको अलग अलग चैप्टर्स बोलते हैं। तो उसमें एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स है और उसमें एक आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो अनटचेबिलिटी तो कोई राइट है ही नहीं, ये तो बेसिकली प्रोहिबिशन है। और भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि नो पर्सन शैल बी लाइक अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड एंड नो पर्सन शैल डू अनटचेबिलिटी इन इंडिया, सो इट शैल नॉट बी प्रोहिबिटेड। सो देयर इज नो राइट, देयर आर गारंटीज, देयर आर ड्यूटीज कि आप अस्पृश्यता, भेदभाव नहीं करेंगे, राइट? नेगेटिवली वर्डेड। आर्टिकल 14 में पाएंगे द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल वाइल ट्रीटिंग विथ इक्वालिटी। आर्टिकल 16 में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एम्प्लॉयमेंट। स्टेट ये नहीं करेगा, आपको अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, स्टेट समानता में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, समान रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। दीज आर नेगेटिवली वर्डेड राइट्स, राइट? तो ये एक बेसिकली थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है राइट्स को समझने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें जानना होगा कि राइट्स बेसिकली एसेंशियल कंडीशंस है, प्रिविलेजेस है, इंटाइटलमेंट्स है। और इनके साथ साथ राइट्स के बहुत सारे रूप हैं, जिनमें सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर राइट्स भी आते हैं, इन्वायरमेंटल राइट्स भी आते हैं। ये तीन अलग अलग वक्त में आए। सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इसलिए इसको प्रथम जनरेशन का बोलते हैं, और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार बाद में आए, इसलिए उनको सेकंड जनरेशन बोलते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड अधिकार थर्ड आए, इसलिए उनको थर्ड जनरेशन राइट्स बोलते हैं। उनको अलग अलग तरह से क्लब किया गया, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स कहलाए। कुछ राइट्स को नेचुरल राइट्स की भी श्रेणी में रखा गया। ये राइट्स वो थे जो कहीं ना कहीं सामाजिक या आर्थिक भेदभाव क्रिएट करते हैं। जैसे मिडिल एजेस में, मतलब 17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 17 सेंचुरी के एंड में यूरोप में ये लड़ाई हुई कि चर्च जो है, चर्च की सत्ता है जो पादरी सब संभालते हैं, या स्टेट बड़ा है। तो वहां पे बात हुई कि पादरी बोले कि मुझे ऊपर गॉड से मुझे मैसेज आया है और मैं ही रन करूंगा, तो स्टेट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ चर्च। फिर निकोलो मैकियावेली, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर है, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, चर्च विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, सो दोज हु आर रनिंग द स्टेट दे विल कंट्रोल द चर्च, राइट? तो ये लड़ाई काफी हद तक चलती है, सालों तक, और फिर फाइनली डिसाइड होता है कि चर्च विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ। तो भारत में भी जाति प्रथा भी नेचुरल राइट्स की तरह आई। इसमें कहा गया कि भाई कुछ जो वेद है, उपनिषद है, उसको पढ़ने का अधिकार केवल कुछ संभ्रांत जातियों को है, और बाकी जाति कार्य करेंगी, दूसरी जाति सेवा करेगी, और कुछ जाति की रक्षा करेगी। तो जातियों का अलग अलग वर्गीकरण कर दिया गया। तो वो नेचुरली इसको स्टैब्लिश किया, क्योंकि कोई गॉड के सिर से निकला है, कोई बाजुओं से, कोई पेट से, और कोई कमर के नीचे से। तो इसलिए अलग अलग जातियों का जो भेदभाव किया गया, वो भेदभाव भी नेचुरल राइट्स के लिए किया गया। तो बेसिकली नेचुरल राइट्स क्रिएट करते हैं एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एक प्रिविलेज क्लास, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं।
फिर कुछ राइट्स हैं जो संविधान से आए, तो संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की बात ही नहीं है, इसके अलावा और भी अधिकार हैं, जैसे भाषा का अधिकार है, जैसे आपको अधिकार है राजनीतिक और सॉरी प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 308, 309, 312 के अकॉर्डिंगली भाषा का अधिकार है आपको। और भी विभिन्न तरह के अधिकारों की बात की गई जो अनुसूचियों में भी आए, जो व्हाट यू कॉल द पंचायती राज एक्ट in 1993, 73rd constitutional amendment 1992 and 1993। तो there are many rights which are provided through the constitution, और कुछ अधिकार थे जो कि संविधान में नहीं ऐड कर सकते थे क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए थे, तो उसके लिए हमने कानून बनाए। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक कानून लाए, महिलाओं को वर्क प्लेस में हैरेसमेंट के से बचाने के लिए एक कानून लेके आए, तो उनको अधिकार है कि वर्क प्लेस पे अपनी सुरक्षा के खिलाफ कंप्लेंट कर सकें, को अधिकार है कि डोमेस्टिक हिंसा से अपने खिलाफ आवाज उठा सकें। महिलाओं को अधिकार दिया गया मैटरनिटी लीव का, उसको अमेंडमेंट करके और पीरियड बढ़ाए गए 2 बार। तो दलितों के लिए भी एक SC/ST अमेंडमेंट सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए, ट्राइबल्स के लिए भी एक्ट लेकर आए, अलग अलग तरह के अनुच्छेद लेकर आए। फिर कुछ जनरल सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक्ट आए, लाइक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जिसमें महिलाओं का भद्दा आप डिपिक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और अधिकारों की बात हुई, तो समय समय पे हमने अधिकारों के लिए अलग अलग तरह के कानूनों को हमने लेकर आए, तो वो लीगल राइट्स कहलाए। जो कानून से आए वो लीगल राइट्स कहलाए, जो संविधान से आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहलाए, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से आए वो फंडामेंटल राइट्स कहलाए। और इन जनरल जो राइट्स की बात करते हैं उनका वर्गीकरण सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और तरह से है। कुछ राइट्स को पॉजिटिव नेगेटिवली बोल देते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। सो ये एक बहुत बड़ा ताना बाना है जो मल्टी लेयर्ड है। अब ये बात कही गई कि जब इतने सारे राइट्स हमारे पास हैं, why we need a different kind of a classification of rights is called human rights, why we need that? So it is said that कि human rights की जरूरत क्यों हुई, और उससे पहले था कि ह्यूमन राइट्स है क्या, क्योंकि कुछ तो सामाजिक हो गए, कुछ आर्थिक हो गए, राजनीतिक, सांस्कृतिक हो गए, अभी ह्यूमन राइट्स कहाँ से आएंगे, आप इनका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? तो थेरेटिशियंस और एकेडमिशियंस ने या प्रोटोगोनिस्ट ने, जिन्होंने जो वेटरन स्कॉलर्स थे ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल राइट्स है। तो अब ये आया कि हॉरिजॉन्टल राइट्स क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल राइट्स की जो मैनेजमेंट साइंसेज में है या इकोनॉमिक्स में, वो अच्छे से समझते हैं कि देयर आर कंपार्टमेंट्स, राइट। सो सो देयर आर हॉरिजॉन्टल्स, so they are verticals of various companies। जैसे एक कंपनी है रिलायंस, अब रिलायंस की कंपनी में कुछ वर्टिकल्स है। एक वर्टिकल है जो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल देखता है, एक वर्टिकल है जो रिलायंस का डिजिटल देखता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक रिलायंस का बाजार है जो बिग बाजार और ग्रोसरीज और आइटम देखता है, एक रिलायंस का एनर्जी है जो रिलायंस की एनर्जी देखता है, एनर्जी बना के गवर्नमेंट को खरीदता है या बेचता है, एक रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है जो फंड्स और वो देखता है, एक रिलायंस का आपका मे बी इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस सेक्टर्स देखता है। तो देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ रिलायंस, बट देयर आर ओनर्स इज ओनली वन, द अंबानी ब्रदर्स देयर, है ना, द अंबानी फैमिली। So likewise, there is a reservation in India. So there are one reservation which is vertical for SC, where only scheduled caste can take the benefit. There is a reservation for ST, where the ST can take benefit, and OBC or the unreserved community. So they are verticals. Now there are a horizontal that flows from all, like the PWD reservation for the disabled. So disabled people can get 2% reservation within the SC, within ST, within OBC, and within UR category. So that's a horizontal that flows from all. So if it is Reliance Petrochemical, Reliance Digital, Reliance Bazaar, or Reliance Foreign Investment, it's all the Reliance Dhirubhai Ambani's family which is taking care of that. So human rights are also accordingly. They are civil rights, they are political rights, they are culture, social, and economic rights, and human rights flows from there. Then that makes a sense. Then what could be the human rights? So it is said that take an example of 100 rights. 100 राइट्स हैं जो आर्थिक अधिकार हैं, आप उसका एक उदाहरण ले लेंगे तो 100 अधिकारों की आप एक सूचीबद्ध करते हैं कि ये 100 अधिकार आर्थिक अधिकार हैं। उसमें से जो अधिकार मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 50 हो सकते हैं, वो अधिकार ह्यूमन राइट्स कहलाए। वैसे ही राजनीतिक अधिकार में कुछ अधिकार हैं जो ह्यूमन राइट्स, अब जैसे
आप एक अधिकार की बात कर लीजिए कि आपको नॉमिनेट होने का अधिकार है, कि आपको नॉमिनेट करके और राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। आर्ट कल्चर और उसके लेके 12 लोग सीट्स रिजर्व्ड है। अब आप कहेंगे नहीं मेरे को अधिकार है रिजर्वेशन का, मैं भी नॉमिनेट हो सकता हूं, मैं अच्छा डांस करता हूं तो मुझे भी राज्यसभा का मेंबर बना दो। तो देयर आर प्रोसीजरल थिंग्स देयर दैट यू नीड टू हैव सर्टेन accreditation, certain awards, certain contributions to music, art, film industries, and other areas there. Then there will be a parliamentary committee. Then the entire committee will scrutinize, and then they will nominate someone as a member of Rajya Sabha, the upper house there, right? So there are the horizontal flow of rights. So you have to understand that which are rights and which are not rights. जैसे आपको एक अधिकार सिविल अधिकार हो सकता है कि आप सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पे वोट देने का अधिकार है, आप कोई नागरिक है तो पासपोर्ट बना सकते हैं। बट अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो यहाँ का नागरिक हूँ और मुझे तो एक नदी के ऊपर घर बनाना है, वहां पे जबरदस्ती मेरे को एक फ्लाईओवर बना के न, तो वो आपका अधिकार नहीं है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर मोर एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। खाने का अधिकार है बट आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पिज्जा 30 मिनट में ही आएगा, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा, राइट? तो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों में जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होंगे वो आपके ह्यूमन राइट्स होंगे। अब ये बोला कि कौन डिसाइड करेगा कि अधिकार है? मेरे लिए तो पिज्जा आना ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि गरीब इंसान जिसको खाने को नहीं मिल रहा उसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, बट मेरे को सब कुछ है, मेरा पिज्जा नहीं आया, मैं उसी को अपना वायलेशन समझूंगा? नो। देन हु विल डिसाइड दिस? So it will be decided on the basis of the resources there. So if a government is having resources, it can give to its individual the certain rights as their human rights, right? If you don't have resources, you cannot claim that those rights. Yes, there are rights, but state is not incapacitated. State cannot give you those rights. तो जब पिछले 10 साल में ये बात हुई कि भारत जो है, इंडिया हैज डेवलप्ड टू अ गुड लेवल and our economy is now at parallel with American economy and we are now the emerging power, or India is a developed nation. So many scholars, economists, they come out with the statistics, theories, models कि अब इंडिया का जो विकास है अब एक विकसित राष्ट्र में इंडिया को आ जाना चाहिए। Then it was found through one of the NGO that was working there in the state of Rajasthan, as PUCL, the People Union for Civil Liberties. It found that on the one side the government is ardently supporting that we need to be clubbed as a developed nation, and our economy is at par with many developed nations, and in fact many developed nations are not having that much of GDP development which we have attained in last many years. So it was claimed that let's count us as a developed nation. That's good if it comes to India. But the data says that still a good number of people are starving of food in India. They went and litigated a kind of a public petition in the form of a writ petition there. And on the basis of that, the court in the Rajasthan, the High Court Judicature at Jodhpur bench has taken this writ petition as PIL, and it was entertained, and the directives were given that the government shall come out with a comprehensive law for providing food safety in India. Then the act was adopted by Supreme Court of India, and Supreme Court of India has asked the government that immediately you implement at least some guarantees for the protection of people who are starving of food. And in 2013, we have a comprehensive law, the NFSA Act, National Food Security Act, which provide that minimum of 35 kilograms for the individual, those who are holding the ration card below the poverty line, and those who are in the Antyodaya Yojana will get 45 kilograms of wheat grains. And if not wheat grains, then in lieu of that, cash amount transfer to their accounts there. And those who are listed there by the government of India is the BPL and the Antyodaya beneficiaries, and that too it is given to the women head, who is the महिला प्रमुख को दिया जाएगा राशन कार्ड के अधिकार पर, और जितने मेंबर्स लिस्टेड होंगे उसके अनुसार उनको गेहूं या गेहूं से समतुल्य अन्य खाद्यान्न उनको दिए जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो कहने का बात है, खाने का जो अधिकार है, भोजन का अधिकार, ये सामाजिक अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए। बट ये 2013 में आता है, आजादी की बात नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था। अगर आप देखें तो आज की डेट में जितने भी भारत में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, उन सारी स्कीमों
को अगर मिला दिया जाए, तब भी केवल एनएफएसए पे इतना पैसा खर्च हो रहा है जितना बाकी सारी स्कीम को कोलैबोरेट करके भी नहीं खर्च हो रहा। तो एनएफएसए इज नाउ द बिगेस्ट what you call expenditure of government of India on policy making. Now, the issue is that there are also counter criticism which says कि अगर आपका राष्ट्र विकास कर चुका है, 9% जीडीपी के रेट से आप बढ़ रहे हैं, तो आपको एनएफएसए लाना ही नहीं चाहिए था। आपका तो विकास इतना हो गया है कि आपको जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ आपका बजट कह रहा है कि आपके यहाँ जो रेसिपिएंट हैं, जो आपके 140 करोड़ में, आप लगभग कितने करोड़ों को आप, मतलब मोर देन ऑलमोस्ट 40 करोड़ यू आर सप्लाइंग द व्हीट ग्रेन्स देयर। तो आपकी इतनी पॉपुलेशन भूखी है, फिर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट गो विद द डेवलपमेंट विद द एनएफएसए। एनएफएसए shows the other picture that you are starving of food. That's what you are supplying food, and then you come out with the new plans, the Maiya Yojana, this and that. So that's a separate story. So the point here is coming back to that. It depends on the resources of a nation. अगर आपके पास अधिकार है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास साधन है, तो आप उनको मानवाधिकार बना दीजिए। नॉर्वे में अगर पिज्जा नहीं आता है 30 मिनट में, तो वो अधिकार है। नॉर्वे में आप बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं, यूरोप में और अमेरिका में भी नहीं मार सकते हैं। आप यह जानते हैं कि अगर कोई चोरी करता है तो पहले तो उसका पब्लिक ही न्याय कर देती है, दो डेट इज इलीगल, बट देर आर वर्ड्स कॉल्ड लेजिटिमेट, सो दे कुड बी इलीगल बट लेजिटिमेट। जनता भी न्याय कर देती है, और कई बार पुलिस, दे आर द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, दे ऑल्सो डू इट in a very illegal manner. They also beat the person who is found of theft or any kind of unsocial activities, rather than going to the court for awarding the imprisonment. तो थाने तक ले जा, सॉरी, अदालत तक ले जाने तक तो पुलिस कितनी बार न्याय कर देती है उस चोर के साथ या उस अभियुक्त के साथ जो चोरी या किसी से रिलेटेड किसी क्राइम में पकड़ा गया। तो दैट डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज व्हाट यू हैव, so that you can implement the human rights in your country. So that's what there are good human rights standard when you have good amount of rupee. Now we have money, so we have implemented NFSA Act, the National Food Security Act. Previously we were not having money, so we have not implemented any kind of act to ensure this thing. Still we are in dearth. अभी भी हमें जरूरत है कि हम होमलेस के लिए we don't have any comprehensive bill, we don't have any government declaration, we don't have any plans. You just you think for a while, 80 साल की आजादी का देश, और अभी भी कितने हजारों लोग फुटपाथ पे और फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन द एंटायर नेशन ऑफ 140 करोड़, वी हैव ओनली वन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, दैट्स ईयर बैक, 25 साल पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीसीज को और मैजिस्ट्रेट्स को जो प्रशासन चलाते हैं वो बारिश में और सर्दियों में रैन बसेरा का व्यवस्था करें, ताकि वो जो लोग फुटपाथ पे या फ्लाईओवर्स के नीचे सो रहे हैं वो बारिश से और सर्दी से बचे और एक मृत्यु को ना, मतलब मार ना जाए। राइट, बारिश में, ठंड में, बाकी महीने में। तो दैट्स वेरी insensitive that we don't have a comprehensive policy, we don't have a law, we don't have any ministry working on those homeless. Thousands and thousands of people are thriving on roads. They are staying in beneath the flyovers. They are beggars. They are living on small livelihoods, selling chocolates and other artifacts there on the street light. Many. So we are lacking law for homeless people. So that's what because we were not having resources to provide them pakka house, right? So for providing pakka house or kacha house, you need money. We don't have money. So that's what we have not provided them. The homelessness is also a great problem in America. From Manhattan to San Francisco to New York to Miami, everywhere the homelessness is problem. Why? Because many of the population, due to push and pull factor that works there from urban to from rural to urban areas, they are the pull factors that they go for employment and the other wage industries, and that's what they are not having any place to afford for suitable living. That's what they are staying in some hostels or some routine stays there, which are paid, and many of them are unable to pay, so they are thriving on the roads or outside the shops in the markets there. Anyways, so that depends on the resources. If you have resources, you would have managed the population there. Now, coming to the further next step, that human rights, ठीक है सर, आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत अच्छा बोला, बहुत सारे राइट्स होते हैं, आपने बहुत सारे राइट्स बताए, आपने ह्यूमन राइट्स की बात भी करी कि हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप ये भी बताइए कि ह्यूमन राइट्स कहाँ से आया और ह्यूमन राइट्स का अर्थ हम कैसे समझेंगे, बाकी अधिकारों से कैसे अलग है।
छोटी सी 2 स्लाइड से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जब अधिकारों की बात कही तो हमने पाया कि दुनिया में सबसे पहले मैंने मैग्ना कार्टा एक एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटेन में आता है, जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड एंड द अदर पार्ट आर आल्सो पार्टी टू दैट। और मैग्ना कार्टा एंड बिल ऑफ राइट 1215 में आता है, जिसमें वो अधिकारों की बात करते हैं। फिर फेडरलिस्ट पेपर, जो अमेरिका को आज़ादी मिली, अमेरिका ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वी आर अ यूनियन ऑफ वी आर फेडरल ऑफ मैनी स्टेट्स, 51 टेरिटरीज, एंड वी विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फेडरलिस्ट पेपर में भी उन्होंने अधिकार दिए कुछ लोगों को। बाद में अमेंडमेंट हुए, 10 अमेंडमेंट के बाद और भी अधिकारों की बातें हुई अमेरिका में। और फ्रेंच डिक्लेरेशन एंड द राइट्स ऑफ द मैन 1789, आप पाएंगे कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा मूवमेंट है, उसमें जो स्टार्ट किया, जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे जो बाहर पढ़ने गए, बाहर पढ़कर जो आए तो वहां से एक्सपोज हुए, तो ये कहा जाता है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी हद तक इंस्पायर्ड था, इसलिए उन्होंने आके यहाँ भी, जैसे विवियन यंग दरिजो ने यहाँ पे एक स्कॉलस्टिक ग्रुप बनाया, और वेस्ट बंगाल में दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिबर्टीज एंड हाउ फंडामेंटल फ्रीडम्स कैन बी प्रोवाइडेड टू इंडियंस देयर। तो फ्रेंच डिक्लेरेशन में भी अधिकारों की बात हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में जब कई लोग मार दिए गए जो माइग्रेंट्स थे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हिटलर ने न्यूरमबर्ग ट्रायल में माइग्रेंट्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को, ट्रांसजेंडर्स को, नॉन नेशनल्स को, माइग्रेंट और डिस्प्लेस्ड पीपल को न्यूरमबर्ग में मारा और यातनाएं देके मारा। ऐसी स्थिति में मानव अधिकारों की बात हुई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशंस, इट वाज गिवन अ मैंडेट टू प्रोटेक्ट and to ensure the protection of human rights throughout the communities, for which one of the body which is responsible for human rights is the United Nations Human Rights Council, and also the United Nations High Commission for Refugee that will work on human rights. A part of that, there are many bodies within the umbrella of United Nations, like the Red Cross International or United Nations Habitat, or there are many agencies which are like a food organization, WHO, FAO. So they're working with the United Nations to enforce human rights there. What was problematic at that point of time was the text itself. That if you read the Magna Carta, 2 pages, or you read the American Declaration, other 4 pages, or French Declaration, you will find that there is a clear mention that XYZ rights will be provided to the men of French origin or American or the Britain origin, only to the men, not the others. Who are the others who are not considered as men? Usually, we think in the binary, plus minus. We think that if it is not men, then women are not provided rights. No, it's about those who are slaves, those who are not owning property, those who are not having house, those who are working into servitude, slaves, prostitutes, transgenders, migrants, displaced people, orphans. They were not provided rights there in all the declaration text, and that was found by Eleanor Roosevelt, the wife of Franklin D. Roosevelt, and it goes to both of them when they have read their document. That is problematic. It only talks about giving rights to the aristocratic class, the oligarchic class. So that's what they have came out, and this is the first international legal document, the Charter of the United Nations there. और जो यूनाइट, जैसे भारत को चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, वैसे ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सब लोगों ने पाया कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया है, तो लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ फेल हो गया, तो राष्ट्र संघ की जगह एक ऐसी बॉडी बनाए जो फेल ना हो और वो अच्छी तरह से काम करे, ताकि तृतीय विश्व युद्ध की विभत्सना हमको नहीं देखनी पड़े। इसलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसको चलाने के लिए एक चार्टर बनाया गया। चार्टर आप स्लाइड में देखेंगे, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 111 अनुच्छेद है, और 111 अनुच्छेद उसके संविधान है बेसिकली, जो राइट्स, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स की बात करते हैं। और उसी टेक्स्ट में पहली बार एलानोर रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एफर्ट से ह्यूमन राइट्स का शब्द हमारे पास भारतीय इतिहास या अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और राजनीति में आता है। ये लेडी हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम किया। और हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं ह्यूमन राइट्स के, कि ये ह्यूमन राइट्स जो है
इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन की बात आती है, तो सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन जो इलानो रूजवेल्ट ने दी, वो ये दी कि ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल हैव बिकॉज ऑफ हिज और हर मियर एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य होने के नाते ही जो अधिकार मनुष्य को मनुष्य रहने के लिए चाहिए, वो अधिकार मानव अधिकार है। तो एक कॉस्मोस में छोड़ दिया, तो फिर कौन से अधिकार? तो जैसे मैंने कहा कि आपका राष्ट्र और देश डिसाइड करेगा कि कौन से अधिकार आपको मानव या ह्यूमनिस्टिक रेलिवेंस या एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। दैट विल बी ह्यूमन राइट्स। मोर ओवर, संयुक्त राष्ट्र संघ भी समय समय पे बताता रहेगा सभी राष्ट्रों को कि आप इन अधिकारों को मानव अधिकारों का दर्जा दे दें। फिर आया कि ठीक है, चलो वो सब बातें ठीक है कि आपके राष्ट्र के आर्थिक साधनों के ऊपर डिपेंड करेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा, बट स्टिल देयर इज अ क्वेरी कि हाउ यू डिसेफर द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाउ यू डिसेफर दैट ह्यूमन राइट्स आर apart allied or they are alike or different from the other forms of rights, social, political, economic और culture rights। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल आया कि ह्यूमन राइट्स को परिभाषित तो कर दिया हमने, बट परिभाषित बहुत जनरल और जेनरिक टर्म में किया है, बट कुछ उसकी फंडामेंटल वैल्यूज होनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को दूसरे राइट्स से अलग करती है। वो क्या चीजें हो सकती है, तो उसको लेके बात हुई। तो कुछ प्रिंसिपल्स पाए गए कि human rights are fundamentally having these 5 elements that constitute to human rights. So what are those 5 elements? They are inalienable, means they are attached to the body and you cannot alienate human rights को एक मनुष्य के आप अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते, उसका जो फिजिकल अस्तित्व है उससे अलग नहीं कर सकते। यही कारण है कि feticide is banned in many part of the world, except there is a medical complications that you need to terminate a pregnancy. It is suitable by different countries to decide that after a fetus or whatever you can term it, it got its existence in the womb of a mother, you cannot terminate it. और हिंदुस्तान में तो पता लग जाए कि पेट में अगर महिला है तो तुरंत टर्मिनेट कर देंगे। तो फीमेल feticide is rampant in India, specifically in the northern part of Hindi speaking belt of India. The female feticide, there are massive data there, right? From starting from Haryana, Rajasthan, Gujarat to UP, MP, and Bihar, Chhattisgarh, the massive female feticides reported there. That's what we have came out with a specific law with stringent punishments that even revealing of the gender of the fetus is not permissible, as the license will be scrapped and the doctors will be jailed. तो पीसी जो PSPCD एनडी एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आप फिटस नहीं बता सकते उसका जेंडर क्या है। फॉरेन में बता देते हैं क्योंकि वहाँ पे फिटिसाइड कम होता है, तो और कुछ मेडिकल इश्यूज के लिए भी वहाँ पे डिस्क्लोज कर देते हैं कुछ यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस में। सो इट्स नॉट अ यूनिवर्सल प्रैक्टिस, बट इन इंडिया एंड मेनी एशियन एंड द अफ्रीकन कंट्रीज इट्स बैन्ड देयर, राइट? सो देयर इज इनएलिजिबल, ताकि वो आप बच्चे को मारे नहीं। तो बच्चे को नहीं मारे तो इसलिए आपने फिटिसाइड का लॉ लेके आए। बट बच्चा कब एग्जिस्टेंस में आता है? 2 वीक्स में, 4 वीक्स में। अकॉर्डिंगली ह्यूमन राइट टू सर्वाइवल, राइट टू लाइफ comes into existence from the womb of a mother। और ये जब तक रहेगा तब तक कि इंसान मर ना जाए। Even in the case of critical illness, there was issues in last 4-5 years that we have started discussing about euthanasia. Euthanasia is about the mercy killing of an individual who encounters an incurable disease। तो ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता, उसकी पीड़ा अत्यधिक दयनीय है। उस स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि उस परिजन के जो रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको जहर दे दीजिए, स्लो पॉइजन दे दीजिए या वेंटिलेटर से हटा दीजिए ताकि ये मर जाए स्वतः, ताकि इसको मुक्त हो जाए इस दर्द से, उस पीड़ा से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी स्टैंड लिया कि यूथेनेसिया इज नॉट परमिसिबल। सो इट्स नॉट परमिसिबल, तो इट हैज यूज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स। दो एनिमल्स के लिए कहीं कहीं यूथेनेसिया यूज किया जाता है आउटसाइड इंडिया, लाइक डॉग्स, दे while getting close to their death period, they got the worm in their body. So these worms started eating dogs and many animals. So they are having unbearable pain. So that's what euthanasia was given to many dogs in many part of the world. So it came from there to human beings. So that cannot be equated with dogs or other animals there.
human life. So euthanasia. So what my point is that they are inalienable. The moment the fetus came into birth, to the euthanasia, the person who is lying on the ventilator, you cannot take the right. They are having right to survival. Inseparable. You cannot have a separate class of rights for tribals and separate class of rights for the Brahmins, for the whites or the black, for the Christians or the Muslims, for the Hindus or the Zoroastrians, right? You cannot have separate class of rights. Rights are inseparable. You cannot have a separate rights for separate individuals. You cannot divide in the age or among the people that those who are living in Kerala are having less rights and those who are living on the hills are having more right. Or if you are young, you have more rights, and if you are old or a toddler, does not have any right. So you cannot divide these rights. They are permanent. So they are permanent. They will carry with you. So it's not like that if you are going to America or you are going to Finland, your rights will be waived off. No, they will be with you. Universal. The term which came out from geography, that many times it's claimed that those who are flying in the high skies, or those who are navigating on the high seas in the Indian Ocean or any water bodies, they are not on land. So they are not on land means they can be killed if it is found, or if they trouble anything, the government does not need to take care. Like if someone got health issues in the International Space Station, the government does not need to take care. If he or she dies on the space station, it's their problem, right? No, they are universal, means they are beyond the earth. If someone is working on the space station, he or she is equally having right to come back to earth if they are having any health issues. Those who are working in the mines, coal mines, or any type of mines beneath the earth, we cannot claim that they are not on the earth. They are in the universe, within the earth, above the earth, on the waters, beneath the waters, in the submarines, or flying in the airspace, maybe a jet plane or some a passenger plane. They are having equal rights to be protected. If they find any issues with the health, immediately, if someone got a heart attack in a plane and his or her life can be saved, then it is the duty of the pilot to immediately land the plane in the nearby airport, rather than going for the big journey to reach to the destination. No, in that case, you have to save an individual. So that's what they are, universal. That's make human rights sounds better, that they are universal, inalienable, permanent, and they are indivisible. Anyways, so then after the definition, the other fact that comes out with the definition is that they are indivisible, they are inseparable, they are this and that. Now you list which rights, and they are also essential for human survival. Which right, at least United Nations shall come out with which rights can be termed as human rights. You at least give us the platform. Then it was decided in 1948, the UDHR was floated, the Universal Declaration of Human Rights. We call it UDHR, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र. So मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद आए, और 30 अनुच्छेदों के साथ ये कहा कि ये लीजिए, ये 30 अनुच्छेद will be human rights. Immediately when it was started floating with the signatures there, 78 member countries, उस टाइम तक तो ज्यादा देश आजाद नहीं हुए थे, उसके बाद से आजाद हुए कंट्री तो 78 के आसपास कंट्री थे, and Saudi Arabia has not signed the Universal Declaration. सऊदी अरेबिया ने दो चीजों को लेके इशू किया, and that is very thought provoking, I'll tell you. हालांकि अगर उसको कंजर्वेटिव वे से देखेंगे तो it could be a conservative, but it is having its own rationale and logic. Saudi Arabia said that there is one problem in these 30 articles, that one article talks about right to freedom of religion, and another article talks about right to freedom of marriage. So Saudi Arabia has deferred it and said that we are not going to sign this document because we are having reservation over these two clauses. Because our population is 100% Islamic, we are a Muslim nation with Muslim people, so we does not allow and we does not entertain any philosophy of distracting or drifting away from the teachings of Quran or Islam. That's what we don't give the freedom of religion, right? And also we don't give freedom of marriage beyond the Islamic value. We cherish Islam. We all are Muslim people. We cherish Islamic thoughts and Islamic teaching. Very good. So that's what they deferred. So it was criticized by many countries for their own reasons, but that was the first objection that came out. With that,
Saudi Arabia also mentioned that you would have not added these two clauses, or other clauses are equally discriminatory to in the eyes of Saudi Arabia. How? Because they reflect civil and political rights, not the socio-economic and culture right, which most of the nations are in need of. मतलब आपने जो ये बनाया है सार्वभौम घोषणा पत्र, इसमें आपने जो अधिकतर राइट्स दिए हैं अनुच्छेद 1 से लेके 21 तक जो अधिकार है वो बेसिकली राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, और 22 से लेके 30 तक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार है। इससे ये होगा कि आपने नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दे दिए, क्योंकि आपके जो नागरिक हैं अमेरिका के और यूरोप के, उनको राजनीति में, फ्रीडम में, इधर उधर की चीजों में, पासपोर्ट लेना है, घूमना है, फ्रीडम्स है, बोलना है, एक लिबर्टी का माहौल चाहिए। इसलिए आपने एक लिबरल आइडियाज के साथ आपने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की। उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अबंडेंस ऑफ। Contrarily, the Asian and the African countries, they are in dire need of roti, kapda, and makan. That's what we need. More article to be encompassed in this universal declaration for social, economic, and cultural rights. Then started the fight from 1948 to 1966. It went into heated discussion. नहीं नहीं नहीं, ये सऊदी अरेबिया ने कहा है, but there is a point. Yes, these rights are not entertaining the socio-economic and cultural demands of the third world. Rather, they entertain only civil and political rights, which give freedom and individual liberty to the European and the American citizens, rather than the greater stakeholders of Africa and Asian countries. Then, within a few years, 1966, the United Nations has came out with International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Social, Economic, Cultural Rights, ताकि वो जो विभाजन है 1 से 21 तक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का और 22 से 30 का इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स का, वो विभाजन खत्म हो जाए, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसलिए 30 आर्टिकल इंटरनेशनल कवेनेंट में, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR, और ये है ICSCR, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर राइट्स। तो ये बेसिकली नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब सार्वभौम घोषणा पत्र के साथ पढ़ेंगे तो ये तीनों कहलाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। एंड इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स आर की टू ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर हमें ह्यूमन राइट्स का पूरा ताना बाना समझना है तो हमको इन 3 डॉक्यूमेंट्स को समझना होगा, एंड दीज आर द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय समय पर कुछ कुछ विधेयक निकाल के, कुछ कुछ डिक्लेरेशंस देकर ये बताया कि और भी अधिकार हो सकते हैं अलावा इन 3 डॉक्यूमेंट के, और वो समय समय पे निकालते रहे। जैसे सीडो कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है तो 1979 में आया। उसके बाद महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए। बोन कन्वेंशन जो टॉर्चर के खिलाफ, कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951, इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1967, रोम कन्वेंशन ऑन राइट टू फूड 1951, एंड देन फर्दर 1996 then Beijing Declaration on Rights of the Women that happened there in 1995, then 2010, then 2015, 2020, 2025. So these rights, these declaration, conventions, covenants, they also prescribe कि और भी अधिकार हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय बिल ऑफ अधिकार के, बिल ऑफ राइट्स के बियॉन्ड है। There are time by time these rights are coming out from various pockets. Now came the discourse that when Saudi Arabia said that we are against this and you have drafted 2 things, then come out the rift. तो लड़ाई है पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को लेकर, वो एक ही लड़ाई है। और उसमें जो लोग हैं, ये जो 78 लोगों ने सार्वभौम घोषणा पत्र में साइन किया, और जो लोग मेंबर्स नहीं थे, वो लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग तो उस टाइम आजाद नहीं थे, हमारे देश तो आजाद नहीं थे, तो हम लोग किसी ना किसी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में थे। तो ये आप लोगों ने अपनी सुविधा और अपनी कन्वीनियंस से बनाया है, तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। हम लोग तो उस टाइम आजाद ही नहीं थे, तो हम लोगों की तो बात ही नहीं सुनी गई। हालांकि इंडिया वाज हैविंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू द UDHR, but most of the countries were not party to the UDHR. So these countries has objected against the Universal Declaration,
And these countries and these scholars are called relativist, and the philosophy is called culture relativism, and the idea is also equally called relativism. And they said that we are different from universal values, and we are having Asian values. तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे अब्दुल अहमद बदावी, उन्होंने कहा 97 में कि हमारे पास एशियन वैल्यूज है विच आर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वैल्यूज. सो हियर कम्स द रिफ्ट, जो झगड़ा है वो वैल्यूज के डिफरेंट होने का है. उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वेस्टर्न वैल्यूज खराब है, हमारी वैल्यूज अच्छी है, या हमारी खराब है आपकी वैल्यूज है. हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी वैल्यूज और हमारी वैल्यूज में बहुत हद तक फर्क है. ये फर्क आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा कि दोनों महिलाओं का अपना अपना वर्जन है कि द मैन इज क्रूअल दैट नॉट अलाउइंग विमेन टू वियर क्लोथ्स, एंड द मैन इज क्रूअल दैट फोर्सिंग विमेन टू हैव मोर क्लोथ्स टू हाइड हर बॉडी. So these are two dimensions of the common reality that they both perceive man as an enemy of women, है ना? The patriarchal society as such. Anyways, so कल्चर रिलेटिविज्म जब महातीर मोहम्मद बोलते हैं तो यही बोलते हैं, एशियन वैल्यूज की बात करते हैं वो, और बोलते हैं कि एशियन वैल्यूज आर अनपैरेलल. So they are very different from the American. They said that we give primacy to family and community rather than individual. That's the difference. अब जैसे, and it's not good or bad, we are different. Like if it is like, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे अमेरिका में 18 साल का कोई व्यक्ति हो गया तो वो, उसके पास हक है कि वो अपने फादर को बोलेगा कि पापा ये घर बेच दो, इससे जितने पैसे आएंगे उससे आधे पैसे आप रख लो, कहीं कच्ची बस्ती में आप घर ले लीजिएगा, बाकी पैसों से मैं एक कार खरीदूंगा और मैं यूरोप टूर पे जाऊंगा, और कुछ पैसे बचेंगे उसको इन्वेस्ट करके एक बिजनेस प्लान बनाऊंगा, या फिर मैं न्यूयॉर्क में एक रूम लेके वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा. राइट. सो ही इज हैविंग ऑल राइट्स टू डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फादर. और बोलेगा ये मैं 18 ईयर्स हो गया, नाउ आई कैन स्लीप विद अ बॉय और आई कैन स्लीप विद अ गर्ल इन माय होम, और आई कैन हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप, and I can go with liquor, maybe drugs, right? Permissible drugs there in America or in European countries, but will it be possible there in India? If a boy attaining at the age of 18 year will say that Papa ye ghar bech do aur car le lo, so you know what will be the answer of the Papa? Because we give primacy to family and community rights. So that's difference. But the example basically demeans the Western civilization. Let's come to the Indian counterpart, that within the fabric of this community and family, many times the family, a girl is married according to the caste class, and then when she's beaten by her husband, the mother or the father of the daughter says that ke husband hi to hai, mara hoga. That has resulted into kind of violence, the marital rapes, physical assaults, and domestic violence, which is rampant in Indian and the Asian families. So I'm not saying that they are good, we are bad, or we are good, they are bad. Good points are there also, bad points are here also. Okay, so we both are good at our own points, we are bad at our own points. So it's only variations of the cultural values that are there. So the Western world said that theek hai, you are saying it because your economies are so agile and important that you have achieved and attained the level of development that Singapore, South Korea, Malaysia, Philippines, which were called the tiger economies, and they have outshined the American and the other European economies there. But by 1997, the Asian financial crisis, they all collapsed. और फिर बोला गया कि अब कहाँ है आपके एशियन वैल्यूज. Then after 1997, it was the rise of China and the neighboring countries. Now China, South Korea, Japan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, they are very good at their economic development, and they are cherishing their own family values. So they are saying that Universal Declaration is only universal for America and Europe, not to us. We are differing and we are relativist, we are culture relativist, and that's what we vary with this thing. So many times it was tried कि if this gulf, ये जो झगड़ा है कि हमारी वैल्यूज अलग है, आपकी वैल्यूज अलग है, इसको खत्म करने के लिए the US and the European countries, they started in 1980s the new international economic order. तो उन्होंने बॉर्डर खोल दिए क्योंकि सभी देश आजाद हो गए थे. आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो दे हैव स्टार्टेड द एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, सेड दैट कि यू ओपन द बॉर्डर्स. अगर आपको पैसे की जरूरत है हम लोन देंगे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपका देश भी विकास कर सके, और आप ओपन कर दीजिए. आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको खूब हेल्प करेंगे. आप अपने बॉर्डर्स खोल दीजिए.
बॉर्डर्स खोला तो मैं जैसे अक्सर साइट करता हूँ कि दिल्ली गुड़गांव में जो गोल्ड स्पॉट और लिम्का की फैक्ट्री थी, जो कैंपा कोला की फैक्ट्री थी, वो सबको आज पेप्सी कोला ने खरीद लिया। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब कोलैप्स हो गई और यूएस इंडस्ट्रीज ने सबको खरीद लिया। वी वर हैविंग गो एयरलाइंस, वी वर हैविंग एयर एशिया, वी वर हैविंग जेट एयरलाइंस, ऑल आर नाउ bought by the Indigo, and tomorrow the Indigo might be bought by Lufthansa. You never know, right? So these owning, the mergers of the companies, owning of the companies happened there when the borders are open. Moreover, the McDonald's and the other pizza and Pepsi, they came into India. And then we, the health issues we have with the entire generation got bulky and heavy. The obese is the new health hazard there in India. And so we are not, we are also undernutrition. So undernutrition because of overconsumptions of junk food, right? We're not getting the quality nutrition. That's what we are undernutrition. So there are two people who are undernutrition, who are not getting food, or who are getting the junk food. Both are undernutrition there. So, anyways, the new international economic order has opened the borders, and many countries they started occupying that the entire business, and then this business is rationalized with many philosophers. They says that okay, now you don't need to have any human rights. Borders are open. Now you can buy an Apple phone in America on the same date. You can buy it in Delhi or in any city there in the world. So now there will be no revolutions, there will be no fight. The world is free. We are all democratic. We all have made the world very free and individual. So we don't need to fight with each other. So this is basically the triumph of democratic and liberal values. और अब पूरी दुनिया में प्रजातंत्र होगा। अब लड़ाई नहीं होने वाली। कन्वेंशनल वॉर्स आर एंडेड। 1992 फ्रांसिस फुकुयामा ने ये क्लेम कर दिया एंड ऑफ द हिस्ट्री में कि अब लड़ाइयां नहीं होंगी। देन हिज ओन स्टूडेंट सैमुअल पी हंटिंगटन रिक्लेम्ड इट कि अब जो लड़ाइयां होंगी दैट विल बी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, that these religious thing, the orthodoxy will be there. Though initial theoretical structure is convincing, though the final conclusions are not. That in the final conclusion, it talks about that the Christians will win and the Chinese will lose. So that's a separate story. But theory is that a religious fight and the sub-religious things will come into there. Every nation or state will have its own problem with underdevelopment or the hierarchical development there. Like India has faced a lot of trouble within the Indian nations from the northeastern part, the Nagalingam, from the Naxal area, the central part of India, and Jammu and Kashmir. Russia faced a problem from Chechnya, which wanted a separate territory. Indonesia is having problem with Aceh. It's a territory which is seeking independence out of India, in Indonesia. Why? Because East Timor got independence out of Indonesia. So it's a problematic. And I'll mind you, 100 of people committed suicide out of pain when East Timor got independence out of Indonesia. People felt so depressed and crying that the nation broke down and they committed suicide there in Indonesia. So the point is that the nations are now fighting with each other within themselves. The problem of Nagorno-Karabakh in Armenia, Azerbaijan, the problem of Khalistan, Waziristan in Pakistan, the problem of Elam in Sri Lanka. The Tamil Hindus wanted a separate state out of the Siali Buddhist. The problem there in Myanmar, that there are many communities, Rohingyas, Wa, Shan, Mon, Karen, Kachin. They wanted a separate territory out of Myanmar. Many nations are seeking separate territory. In Cyprus, half of the Cyprus wanted to have a kind of affiliation with Greek, and the half of them are very fond of Turkey. So that's a division of the state between two. Immense problem, clash of civilization. So that was the theory, that the state will fight among themselves. There will be no conventional war. But what's happening today is that they are fighting. Now there is again a rise of conventional war at par with the rise of the non-conventional war. So the conclusion for the second session of mine is that there are human rights crises which are going throughout the world. They are going through two platforms. One is that the clash of civilization, which says that कि राष्ट्रों को अपने ही राष्ट्रों में प्रॉब्लम्स होगा.
अब राज्य अपने ही लोगों से लड़ेंगे, right? So they will have the problem with their own people. And then we saw a different setting in last few years, the rise of conventional war. So whether the conventional war or new forms of war, it ultimately is a result of high level of human rights violation. Syria में there are internal conflicts. Cambodia में Hun Sen has killed thousands of people. Cyprus में I told you, Myanmar में I told you, Balochistan needs a separate territory. Kurdistan and wherever they are seeking separate territory, armed aggression of the forces by the state are crushing the civil liberties. So Indonesian forces are there deputed in Aceh. Russian Federation forces are working there in Chechnya. Likewise, the forces, Sudan is already bifurcated between two states. We have seen how the Kosovo came out of. There are many countries that broke out of Czechoslovakia, Czech Republic, Slovakia, Slovenia. Then there are Trinidad and Tobago. Sorry, then Montenegro. Then it comes out Serbia. Then it comes out Albania, and then finally we have Kosovo. Next will be Somalia and Nigeria. They are also burning with a bifurcation or trifurcation of their state. Everywhere there are problems of human rights. So that's what we need to take care of human rights. And there are other movements also which are coming out of the human rights. They are asking the LGBTQI. The surrogates are also coming asking for their rights. Albinism is another work. There is no fun in sex work. There is nothing work in sex. So prostitutes are also asking for their own rights rather than terminating them as they shall be sex prostitutes only. No, there's nothing good in work. There's prostitution is not work, right? Subalterns, the Dalits, tribals, blacks, and those who are at the margins of the society, elderly and the gendered women, or the gender minorities, they are subalterns altogether. They are seeking rights and protection from the domestic violence, rape, and sexual harassment. So there is everywhere a demand of human rights, and then there are laws and policies there, and there are a lot of agreements and settlements, and finally the United Nations is also claiming that yes, we need to have certain rights provided and certain development goals provided that will ultimately cherish the human rights of individual. And that's what we have, so 17 sustainable development goals with 169 targets there. So whether it's sustainable development goals or it's an American interventions in Venezuela or instability in Iran, Nepal, or Bangladesh, whether the new forms of conventional wars between Russia and Ukraine, Israel and Palestine, or the old forms of wars that's going there in Chechnya or Xinjiang to Aceh and East Timor, there are massive human rights crises which we are entered into. So this world order is going towards a chaotic form. The states which are abundance of the resources are becoming more orthodox, ultranational, and they are creating issues through tariffs, through foreign trades, through visa regimes. Everywhere there are issues with the human rights. So in this world, in these days, we are at a very critical point that there are crises everywhere, there are contradictions everywhere. We need to spend thousands of rupees through Vande Bharat or some Vande Mataram program to evacuate our students who are there in the Ukraine there. So that was also a trouble for the government of India. Similarly, there are many issues which lingered and bothered India abroad and the neighboring countries. So we are at the verge where there are serious crises of human rights loss, and the world order is going in a way that it will be maybe a third world war or has entered into a very dangerous era where there will be compromises to human rights. And the failure of media is the last part that I don't need to explain. So with that, I have hopefully done justice to my talk. So now the house is open. If you have any queries, if you have any questions, they are open for discussion. If no queries, questions, we can have just a discussion formally. If not discussion, then you can have your point related to human rights or gender or violence or international relations. If not, then it's all up to you. Now my deliberation is over. You can open your camera for 2-3 minutes. We can have just a ceremonial
a kind of a talk for 2-3 minutes. I'm not going to bother you long. At least I can see your faces. So for 3 hours, I'm here constantly. Sir, namaskar. Hopefully your mic is mute. नमस्कार नमस्कार Namaskar. At least you have heard me, and you have Dr. Yadav, Dr. Gayal Baliram Sambhaji. Arey wah, beautiful name. Then ma'am. So we can have if there are any questions, queries, but I tried to just जो मेरा उद्देश्य था वो आपको बताना कि मानव अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया में अभी इश्यूज चल रहे हैं, and we are in a dangerous era. We are living in a very dangerous world. So it's very difficult for us to यही बताने का मेरा पर्पस था. We are passing from a very dangerous age. वेनेजुएला में जो हुआ, ईरान में जो हो रहा, it could be any country, could be any, maybe Mexico could be third country. Let's see. So you can have your point. You can come out if there is any questions, any queries, any discussion. We can have it here. We are still left with 10-15 minutes there. Yes, there are like. Yeah, still we have 10 minutes. Any questions, any queries, anyone to have their points? गायल जी आप कहाँ से हैं? गायल बलिराम संभाजी, अनम्यूट कीजिए माइक. Okay, sir. I am from Pune, sir. अरे वाह, ब्यूटीफुल सिटी. आई नेवर बीन. Pune, Maharashtra. पुणे का बहुत तारीफ सुना है, हम कभी गए नहीं. तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. डॉक्टर यादव, यू मस्ट बी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. सर मैं महाराष्ट्र से हूँ राजे रामराव महाविद्यालय सांगली जत तालुका. सांगली, सांगली, आई नो सांगली. या हाँ सांगली. सांगली, द सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. जी. और कोई मैम, आप कहाँ से हैं? म्यूट म्यूट अनम्यूट कीजिए मैडम. सर गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. मैं हूँ सर असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस अरे डिपार्टमेंट. वाह, आपका तो हमारा ही सब्जेक्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगा सर. जी मैडम, आपका और हमारा तो एक ही सब्जेक्ट है. जी. जी. और कोई तो वही है, मतलब जो मैं बोलना चाहता था. बेसिकली माय फोकस इज ऑन international relations and contemporary world altogether, how they are associated with the human rights, the concept of human rights, and the allied discourses which are working there in the international scenario. So I need to be bilingual, Hindi में भी, English में भी. So many times it become confusing stage हो जाती है मैडम. हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, फ्लो जाता है, तो फिर हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी इंग्लिश में. बट जो है जी. Sir, तो very interesting and very powerful is lecture सर आपका. वेरी नाइस सर. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम. तो और किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, और नहीं कहना है तो जस्ट आई विल शेयर माय नंबर. इफ यू वी कैन हैव एनी टॉक, एनी डिस्कशन, एनी फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक ऑन human rights or any related topic, I have shared my number and I have shared my name. This is my WhatsApp number. You can contact me on this or Facebook or any social media. We can have any kind of exchange of ideas, academic discussions, or chat. And if not, you can invite me for a lecture, or we can have other discourses on academic front. So with that, we can, I Hello, think we sir. can sum up. If there is someone for the vote of thanks, then they can ask. Hello, for the sir. vote. Yes, please. Yes, sir. As you already discussed, we know that now world is moving or at a dangerous situation. Okay. What is the position of India in that scenario? Actually, India's position was previously, we have followed the non-alignment movement. For last few years, it was thought that we will be aligning with the American counterpart, because aligning means in sense that we are going with the developmental phase, economic development. But when it comes to political decisions, we are independent. We are not governed by anyone. We are not directed by anyone. Actually, India, the positive factors are two. India is having a nuclear capabilities. So India does not need to listen or take any lessons from anyone. And now we have achieved good economic development, and our voices is also ardent. We are vociferous. So हम लोगों के पास, we are having a lot of diaspora everywhere in this world. So our voice does matters there. But many conflicts we does not want it to poke our nose. That's another fact, because everyone knows it's
the game of oil or it's game of politics or whatever. Maybe Donald Trump wants a Nobel Prize. Jo bhi hai, it's if until and unless it bothers India, India is not going to poke its nose in the internal affairs because we respect the customary practices that all are independent nations. जब independent nation, yes, we support democracy, we support the values of democracy. So we are not in favor of someone is like abducted from Venezuela. Definitely, India criticized that, but we are not taking any kind of, we are not poking our nose in those internal affairs because the way America is heading, you never know to what level America will go. But yes, we are having an independent voice now, and it is now becoming more sound and profound. That's we have to understand. And coming days will be more decisive. So here, sound is about keeping our opinion, gathering support, and staying together. It's not to intervene someone territory and devastate. That's never was an Indian philosophy. We believed and sustained with the Gandhian and policies, and we are having our own socialist values there, which we carry the cultural and the socialist capital. So we are working on that. Jay. Okay, sir. My another question is that related with that human right, we discussed in second half about human rights. Now it is related to our India only. Uh, Now, what is the role of media in that human rights? And as we already discussed, verticals, horizontal part of that. Now, in horizontal sense, are that media performing their duties in terms No, of human rights in media India? actually, media did its job for many years. Beautifully, it has criticized government. The duty of media is to have a critical appreciation of the government. That wherever government is doing good, it should appreciate. But wherever government is lacking, like roads, pathways, corruptions, it should expose. But what's happening throughout the world, it's not India's phenomena, it's global. Like the American media or the European media, it has always supported the political regime, right? There are few media houses made, you can term them maybe intellectual class or the leftist, which criticize the government. But most of the media houses are owned by the big business houses, and business houses are supported to the government. So every time the media has supported the government, except few houses which are not in power, right? So it's all about who is in power, who is not in power in America. Now coming to India, the media has done its duty for many years, but now media, the kind of the way media is heading, is basically declining. It's not coming out with a critical aspect of whatever the policy is there. The media is basically has downgraded, and it's widely accepted the way it is coming out with the policies. Hardly the media reports out the critical outcomes of the leaders or business houses or corrupt practices. It's just a reporting what's happening. It's not coming out with concluding. Here, the failure of academicians also, because those who are writing the editorials, they are also not coming out with the critical evaluations there. So only those who are appreciating or those who are coming out just depicting the instances is there, rather than coming out with critical perspective. Yes, media is declining these days in India and many countries. Yes, sir. So if there is any query left, otherwise we can have a vote of thanks. If there is no one, then we can have formal closure. बोलिए Sir, साहिल जी. okay, sir. My question is related with that China. Nowadays, we are campaigning since last 7 to 8 years that ban China like that. Is that possible India to ban their products and survive uh, in the global sense No, nowadays? no, it's not practical. देखो, you need somewhere you need to be very practical, है ना? Yes. Your industries, your machines, your petrochemical products, many things are imported from China. The best way to counter is the like make in India. That's the perfect thing. So, but it requires more inputs from government. Government should raise the spending over the make in India. It should throw more loans, more innovative ideas to But universities. for that, sir, we required more number of resources
and we like lack. that. Definitely But we can. only we are doing focusing on that, but or discussing everywhere, but not providing that resources. Sir, Or they are we they, don't have, I think, that concrete plan to counter China strategy and all that. because May- we have plans, but definitely their economy is massive. It's a big economy. They are throwing immense money. That's one part of the story. They are having immense resource that outshine India, right? But there is also will. I'll give you a beautiful example. I used to cite it. Beautiful example, which I can give you. Right? Just listen for 2 minutes, right? Before the session ends. Chinese people, they leave their country, they go to a country there in Africa, which many people in India don't name even. Like there are many countries like Suriname, right? There's a country, Western Sahara, Algeria, there's a country called Zimbabwe, there is a country Congo, right? Rwanda. You know? Chinese people will go to Rwanda in a family. They like the Marwadis travel in India before independence. They go there, they serve Chinese interests, they work on petrochemical industries, they work on making ports, building industries, making big skyscrapers or building infrastructure, and they retired from there. They never go back to China, right? So they contribute their whole life for sufficing the interest of China. The kind of nationalism they have is that there in the blood of other people. I'm not criticizing India. I'm not against any Pakistan or any nation, but is it there? The way Chinese are doing, other countries are not having those parallel example. May you take Germany, may you take Philippines, may you take any country in the world. People like the Marwadis, they go with their families, taking a suitcase and enter to a new place and start their business and serve the whole life. Sometimes they return back to their whatever ancestral place. But these Chinese people contribute. But the other people in South Asia and the neighboring countries, they hardly travel and do the nationalistic plan. That's what the entire market there in Singapore, Philippines, Indonesia is run by the Chinese migrants. Southeast Asia is all owned by the Chinese people. They are running the entire Southeast Asia. Except the South Asia, they have not entered in India, Pakistan, Bangladesh, or Myanmar. They're already 140 crores, right? So it's again a chaotic population numbers there. But they have done it in Southeast Asia. They are doing it in Africa. They are replacing and they are building Africa with their hands and money. So money is definite. We are lacking in money, but will is equally required. Do we have that will to serve the national interest abroad? That we have to actually find it out ourselves, and we have to do exercise to find it out to what level can me, as Dr. Ashok Nimesh, can go to an African continent and serve the nation for the whole life. Is it possible? So we need to have self-introspection. Then only the nationalism, the element of nationalism, national development, the way of Chinese are doing. So we have to understand, we need to work on those diasporas, those Chinese people are doing it beautifully. That's the part of the story. Okay. So I think we are done away with the queries and questions. I have completed the 2 sessions, and hopefully if there is no one for the vote of thanks, so we can have a formal closure of this session. So I'll extend my heartfelt gratitude to Dr. Rafi sir for giving me this opportunity to deliberate among my fellow colleagues on this FIP. And I'm also extend my heartfelt gratitude to Baba Bhimrao Ambedkar Marathwada University, Sambhaji Nagar, or previously Aurangabad. So with that, I hope that we can have further exchange of ideas and maybe academic collaboration and exchanges on some platforms, physical or e-platform. That will depend on your and mine initiatives in future. With that, hopefully I have done justice to my topic, and thank you, and allow me to leave. Thanks everyone for bearing me for 3 hours. Thank you everyone. And now I can leave the session and you can have further deliberation from other research academicians. So thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir.